नहीं है, दवाएं नहीं पहुंच रही हैं और बहुत बुरा हाल है वहाँ का। कोई पुरसाने हाल नहीं है, दिलचस्पी नहीं है वहाँ के में अमन लाने के लिए। बहुत हसास जगह है, वहाँ के लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं। वहाँ कोई मनशियात फरोशी के लिए जो अफ्यून काश्त नहीं होती, कोई इस तरह का काम नहीं होते, कोई असले की फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। इंतहाई सिविलाइज पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वहाँ अमन नहीं है। हर कोई अमन चाहता है, अमन से रहना चाहता है, लेकिन कत्ल गरत गरी का सिलसिला, मशकूक सिलसिला नहीं रुक रहा है। अगर वो अमन के लिए मार्च करते हैं तो अगले दिन कत्ल होना शुरू हो जाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि वहाँ पर अभी वहाँ के जो लोगों ने मुझे बताया पेट्रोल नहीं है, रास्ते बंद हैं, जनाजे रास्ते में जो लोग पिशावर में मर गए वो पाड़ा चनार नहीं कुरम नहीं जा सकते, उनके जनाजे रुके हुए हैं। ये सूरत हाल बनी है वहाँ नामनी की। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस पर तवज्जो दी जाए। अमन उनका बुनियादी हक है, आइनी तौर पर भी और इंसानी तौर पर भी, और वहाँ के लोग अमन से रहना चाहते हैं, और लेकिन वहाँ अमन नहीं है। अभी थोड़े से अरसे में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 200-250 लोग ज़ख्मी हैं। मेरे ख्याल में ये खामोशी दुरुस्त नहीं है। एक भी इंसान की जान बड़ी कीमती है। वो भाई हैं, वो आपस में रहने वाले, सदियों से इकट्ठे रहते हैं, उनके डिस्प्यूट्स हल हो सकते हैं, मुश्किलात हल हो सकती हैं अगर हुकूमत दिलचस्पी ले। वहाँ हमारे अस्करी इदारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो दिलचस्पी ले। कोई अमन नहीं है वहाँ पर, कोई जान महफूज नहीं है, रास्ते बंद हैं। मेरी गुजारिश है कि रास्ते खुलवाने की कोशिश करें। इस पे मैं आपको टाइम बाद में दूंगा, पहले ताज़ियत कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो यहाँ हमारे मीर हुमायूं खान मरी, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उनकी डेथ हुई है। और जो आपने ज़िक्र किया कि जो बलूचिस्तान में और दूसरे शहादतें हुई हैं, उस पे खुरम एजेंसी पे, तो आप भी उसी के लिए कहना चाहते हैं? अब के ये एक बड़ा ख़तरनाक वाक़या है बलूचिस्तान में। कत्ल गारत तो पूरे आपके मुल्क में इस वक्त शुरू है। कोई न लॉ है, न कोई रिट है लॉ की, और न किसी कानूनी इदारे की कोई रिट कायम रह चुकी है। अब पार्लियामान के हवाले से भी यही हाल है हमारा कि पार्लियामानी निज़ाम को भी मेरे ख़्याल से यरगमाल किया गया है। तो वो वाक़या जब हुआ है सर, वो वाक़या जिस तरफ जिस नेश में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा मकसद यही था कि इस वाक़ये की तहकीकात इंटीरियर कमेटी को दी जाए। उसके लिए मैं अलहदा टाइम दूंगा जी। अभी सिर्फ ताज़ियत के लिए मैं मौलाना अता-उर-रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ फरमाएँ। आपके पार्लियामेंट्री लीडर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातिमुन नबीय्यीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व तरहमना लनकुन मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन ख़तायाना कमा बाअदतहु बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िहु मिनज़ ज़ुनूब व नक़्क़िल ख़ताया कमा युनक़्क़िल सौबुल अबयज़ मिनद दनस। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़कीरिना व उन्साना। अल्लाहुम्मन अहयतु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम व तवफ़्फ़ितु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ा अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाब जहन्नम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक। ऑर्डर नंबर 2, इसके हवाले से तो बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट में अगर कोई बात करना चाहे। ये जनाब चेयरमैन दुकी के हवाले से हमारे दोस्तों ने, कामरान साहब ने मसला उठाया और उमर फारूक साहब ने। दुकी का मामला कुछ मैं दूसरे एंगल से उनको देखना चाहता हूँ और इस पर गौर करें। दुकी में पहले 2 महीने पहले या 3 महीने पहले वहाँ बंदे अगवा किए गए। शहर के अंदर है ये सारे जो लीज कोयले खान मौजूद है, वहाँ लेबर पे उन्होंने हमला कर दिया और ये ड्रोन जो कैमरे वो इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा रात 2-3 घंटे ये जंग जारी था, लेकिन वहाँ 20-25 तकरीबन के करीब वहाँ शहीद किए गए हैं और ज़ख्मियों को तो तादाद नहीं है। लेकिन जनाब इस फिक्र मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ दूसरी बात की तरफ कि ठीक है, दहशतगर्द तो दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन ये न कोई सहरा था, न कोई इस तरह गैर आबाद इलाके में हुआ, ये शहर के अंदर ये हुआ।
यहाँ आबादी मौजूद है, या एफसी मौजूद है, यहाँ इंतज़ामिया मौजूद है, या सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो दहशतगर्द बिल्कुल सही सालम सब निकले, न कोई किसी को ज़ख्म लगे, न किसी के पीछे कोई गए, न कोई गिरफ्तार हुए, न कोई कत्ल हुए। तो जनाब स्पीकर, इस तरह क्या ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं? हम इस तरह क्यों, यानी इस पे तो हाँ आप लोगों ने मेरे जनाब चेयरमैन मेरे अर्ज़ ज़रा सुन ले, इस पे हमने तो दुआ की, बेशक दुआ करना, लेकिन मुझे तो शर्म आता था कि हम इस पे दुआ कर रहे थे, क्योंकि इस तरह दरमियान में जब शहर के अंदर ये कार्रवाई कर सकते हैं तो ये दूर दराज मुंतशिर आबादी जो गाँवों पे कोई आ जाए वो बेचारे क्या कर सकते हैं? लिहाजा जनाब ये कमेटी के हवाले किया जाए, इस पे गौर किया जाए, इसके सही ताक़ीद किया जाए। इस तरह नहीं कर सकते कि बस हमने कुछ इस पे बात कर लिया और ये मेरे मुतालबा है कि कमेटी के हवाले किया जाए। रेफर टू द कमेटी। ऑर्डर नंबर 2 सब दोनों की। On behalf of Senator Muhammad Ishaq Dar, a leader of the House, I hereby under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 41 of the said rules regarding question hour be dispensed with for today's sitting of the Senate. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. Leave of absence. Senator Abdul Wase has requested for the grant of leave from 9th to 14th September 2024 during the 342nd session due to personal engagement. Is leave granted? Granted. Senator Saeed Ahmad Hashmi has requested for the grant of leave for the 27th and 28th August and from 2nd to 13th September 2024 during the 342nd session due to personal engagement. Is leave granted? Granted. Senator Rana Mahmood Hassan has requested for the grant of leave for 13th September 2024 for the 342nd session due to personal engagement. Is leave granted? Granted. Senator Mir Dostan Khan Doomki has requested for the grant of leave for 16th September 2024 during the 342nd session due to personal engagement. Is leave granted? Granted. Senator Muhammad Ishaq Dar has requested for grant of leave for 16th September due to 2024 during 342nd session due to official engagement. Is leave granted? Granted. Senator Liaquat Khan Tarakai has requested for the grant of leave for the whole session 343rd session due to illness. Is leave granted? Granted. Order number 3. Senator fazal-ur-rehman, Chairman Standing Committee on Interior, may move. On his behalf. Sir, I Senator Shahadat Aman on behalf of Senator fazal-ur-rehman, Chairman Standing Committee of Interior, to present report of the committee on the bill to further amend the Prevention of Smuggling of Migrant Act 2018, the Prevention of Smuggling of Migrant Amendment Bill 2024, introduced by Senator Samina Mumtaz Zahri on 10th June 2024. Report stands laid. Order number 4. Sir, Senator Shahadat Aman on behalf of Senator Salim Rahman, Chairman Standing Committee of Interior, to present report of the committee on the bill further to amend the Prevention of Trafficking of Person Act 2018, the Prevention of Trafficking in Person Amendment Bill 2024, introduced by Senator Samina Mumtaz Zahri on 10th June 2024. Report stands laid. Order number 5. Sir, Senator Shahadat Aman on behalf of Senator Faisal Salim Rahman, Chairman Standing Committee on Interior, to present report of the committee on the bill to further amend the Prevention of Electronic Crime Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024, introduced by Senator Samina Mumtaz Zahri on 1st January 2024. Report stands laid. Order number 6. Mohsen Raza Naqvi. Senator Syed Mohsen Raza Naqvi
Minister for Interior. May move number 6, item number 6. Any minister can. Sir, on. Just a second. Item 6. Sir, on behalf of Senator Syed Mohsen Raza Naqvi, I, Mohammad Aurangzeb, to introduce a bill to provide for the establishment of a National Forensics Agency, the National Forensics Agency Bill 2024. The bill as introduced and referred to the standing committee concerned. Order number 7. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue. Chairman Sahib, I beg to move that the bill to amend the Deposit Protection Corporation Act 2016, the Deposit Protection Corporation Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. It is opposed? No. You want to make brief statement? Gee, before I beg to move that this bill should be passed, this was discussed in detail in the Standing Committee. This is to ensure further stability of the financial system, ताकि जो बैंक रेजोल्यूशन एंड रिकवरी regime in पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा है उसको further strengthen किया जाए. और this is essentially to deal with the non-viable banks, ताकि जो taxpayer money है that may not be needed for banks resolution except under extreme circumstances, and therefore the funds held by a deposit insurance agency can be used for providing financial support. ये उसका सर basic crux Thank है. you, Minister. It has been moved that the bill to amend the Deposit Protection Corporation Act 2016, the Deposit Protection Corporation Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, may be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted unanimously. Before taking second reading, the member in charge may inform the House about the salient feature you have already informed. जी, Second reading of the bill, clauses 2 to 23. correct. We may now take up the second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill, clause 2 to 23. There is no amendment in clause 2 to 23, so I will put these clauses as one question according to the rule 104. The question is that clauses 2 to 23 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the clause 2 to 23 stand part of the bill. The preamble and the title of the bill. The question is clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the clause 1, preamble and the title stands part of the bill. Order number 8. Finance Minister. Sir, I beg to move that the bill to amend the Deposit Protection Corporation Act 2016, the Deposit Protection Corporation Amendment Bill 2024 be passed. It has been moved the bill to amend Deposit Protection Corporation Act 2016, the Deposit Protection Corporation Amendment Bill 2024 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed unanimously. Thank you. Order number 9. Chaudhry Saleh Hussain, Minister Saab, please move order number 9. Bismillahirrahmanirrahim. I, Chaudhry Saleh Hussain, Minister for Overseas Pakistanis and Human Resource Development, move that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special court Overseas Pakistanis Property Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration Is at it once. opposed? No, sir, unanimously passed. आप इस पे थोड़ा सा कोई बात करना चाहते हो तो कर लें. थैंक यू explain चेयरमैन करना साहब. चाहते हो मैं बिल के- समझता हूँ कि जी ये बड़ा ज़रूरी था जी, क्योंकि मेजॉरिटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका 90% जो
इश्यूज़ हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही होते हैं। इससे ये है कि विदिन 90 डेज़ उनको इसके ऊपर फैसले भी मिल जाया करेंगे और वो वहाँ बाहर बैठ के भी फ़ाइल कर सकते हैं वाया ऑनलाइन। और हमारे जो हाई कमीशंस हैं वो भी उनको भी हमने इसके अंदर Sir, great demand from the overseas Pakistanis. It has been moved that the bill, Unanimously. हाँ बड़ी डिमांड थी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इट हैज़ बीन मूव्ड और ऑनलाइन फाइल हो सकेगा ये, ठीक है और वहाँ से बैठ के ही एविडेंस दी जा सकेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट्री लीडर। सर ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज़ हम भी ये बड़ी देर से कहते रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो अपने एसेट्स इधर लेते हैं या रखते हैं या इनहेरिट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, फॉल्स केसेस बन जाते हैं और वो फिर लड़ते रहते हैं और फिर इवेंचुअली थक हार के वो गिव अप ही कर देते हैं प्रॉपर्टी। तो ये कब्ज़ा ग्रुप का एक प्रोसेस है। सिर्फ मैं चाह ये रहा था क्योंकि अगर ये अभी आया है कानून, हमने देखा नहीं, तो इसको कमेटी में भेज दीजिए, इसको शायद इम्प्रूव कर सकें हम। वो तो कमेटी से यूनानिमसली हो उसको ज़रा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें उसमें कौन से क्लॉजेज हैं जो आपको इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, इस चीज़ को जनाब चेयरमैन प्रोटेक्ट करेंगे। मिस्टर साहब से रिक्वेस्ट ये है बताएं कि ये जो केसेस फाइल हो जाते हैं फॉल्स केसेस, उसको भी उन्होंने केटर किया है इस कानून में कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम ये आता है प्रैक्टिकल। बाकी जनरल बात करना तो कानून में बहुत चीज़ें हैं। सेनेटर साहब जी तशरीफ रखें जी, आप भी कर दें ताकि एक ही दफ़ा जवाब दे देंगे। बिल्कुल, मैंने बिल पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बात है। और चेयरमैन साहब, जब भी हम बैरून मुल्क जाते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनसे भी हम मिले हैं तो वो कहते हैं कि जी हम ये जायदाद के सिलसिले में जो पाकिस्तान में जायदाद ख़रीदते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर कब्ज़ा होता है और धोखेबाजी होती है, जिससे हमारा वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम क्यों पाकिस्तान में अपने पैसे ज़ाया करें, क्यों हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सर यकीन जाने, एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं जब भी जाता हूँ मेरा गिरेबान पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं और क्यों इस तरह से ओवरसीज पाकिस्तान के साथ ये जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूँ ये आपने जो बिल लाया है ये उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब आप डिफ़र करें के लिए बड़ी बात करता हूँ। मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी 28 साल से रहा हूँ। ये बात ठीक कहते हैं, इनके गिरबान अब नहीं पकड़ेंगे क्योंकि अब बिल आ गया ऊपर, इनके पहले गिरबान पकड़ते थे। इशारा नहीं करते नहीं चले मेरा। अच्छा बात यह है कि ये ज़्यादातर होता था रिश्तेदार जो है ना सर, ये रिश्तेदार ये काम करते थे। जितने बाहर हम लोग जो रहते थे वो पैसे बेचारे सुबह शाम मेहनत करके भिजवाते थे पैसे। अब ये बिल आ गया 90 डेज में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये अच्छा है, बहुत अच्छा, तारीफ करते हैं। थैंक यू। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछा था वो उसका मिनिस्टर साहब एक स्पेसिफिक चेयरमैन साहब, सेनेटर ने जो सवाल पूछा है, हमने तो जी मूव किया था स्पेशल कोर्ट बन जाए, तो आगे कोर्ट ने फैसला करना है जी इसके प्रोसीजर के बारे में और बाकी मामला। इसमें जो हमने चीज़ डाली एक 90 डेज़ का और दूसरा ऑनलाइन, ताकि उनको सहूलत रहे। वो वहाँ से यहाँ आते थे जी सफ़र करके और यहाँ से फिर एक पेशी के बाद स्टे ले लिया जाता था, फिर उनको वापस जाना पड़ता था। तो उनकी सहूलत के लिए हमने किया है और इसकी डिटेल्स में और जो खुद इसका फैसला करेगा। जी समझे नहीं थे मेरा सवाल। मैंने ये पूछा ये था कि इसमें अगर कानून में अच्छी बात है, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए अगर ये भी हो जाता कि जो पिटिशन्स फॉल्स गलत केसेस जो फाइल होते हैं वो भी अगर एक मखसूस अदालत तक चले जाएं, जो भी केसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये हम ये जो लकूना है और जो गैप है वो कवर कर सकते थे। तो सवाल ये था कि ये कानून इसको कवर करता है कि नहीं? स्टेप 1 है, अब स्टेप 2 में वो दूसरे भी कर लेंगे। इरफान सदीकी साहब। शुक्रिया सर। पहली बात तो यही है जो सारे दोस्तों ने कही है मुख्तलिफ दलाइल की बुनियाद पे कि ये बहुत अच्छा बिल है। हमारे जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं हमारा बहुत बड़ा एसेट हैं, बहुत बड़ा असासा हैं और रिसेंटली उनकी जो तरसीलात ज़र हैं वो रिकॉर्ड हद पे पहुंची हैं।
$3 बिलियन की हद तक वो माहाना पहुंच चुकी हैं, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वो पाकिस्तानी शहरी हैं, और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उनके हुकूक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे चाहे उनके अजीज़ रिश्तेदार कब्ज़ा कर लेते हैं या कोई दूसरे लोग कर लेते हैं या दोस्त कर लेते हैं, एक कानून वज़ा हो गया है और ये कमेटी के पास गया था। कमेटी ने इसको थॉरोली स्टडी किया और यूनानिमसली इसको सपोर्ट करके भेजा है। वो इतराज़ नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कोई गलत। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, बात यह है कि अगर जो अली ज़फ़र साहब को मैं समझाऊं कि फ़ॉल्स केसेस जो बनते हैं, फ़ॉल्स केसेस से मुराद अगर उनकी ये है कि कोई आदमी जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो फ़ॉल्स क्लेम कर देता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। डू यू मीन दिस सर? तो इस तरह तो सर पाकिस्तान के सारे कवानीन जो हैं वो बदलने पड़ेंगे, क्योंकि कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा देता है वो भी फ़ॉल्स होता है, चोरी का लगा देता है वो फॉल्स होता है, डाके का लगा देता है वो फॉल्स होता है। एवरी केस या तो फिर सारे कवानीन आप बदलें, और उसमें ये सर मेरी बात ये है कि या तो फिर हर कानून के साथ ये लिखें कि अगर वो फॉल्स होगा तो जी। तो मेरी आखिरी बात सर, आखिरी बात ये है, आपका काम मैं कर रहा हूँ। चले सर, थैंक यू सर। It has been moved that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special court overseas Pakistanis property bill 2024 as reported by the standing committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted unanimously. Second reading, clause 2 to 23. We may now take up the second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill, clauses 2 to 23. There is no amendment in clause 2 to 23, so I will put these clauses as one question. The question is that clause 2 to 23 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The clauses 2 to 23 stand parts of the bill. Clauses, the preamble, the question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The clause 1 of the preamble and title stands part of the bill. Order number 10. Minister Sahab, move kare. Bismillahirrahmanirrahim. I, Chaudhry Saleh Hussain, Minister for Overseas Pakistanis and Human Resource Development, move that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special court overseas Pakistanis property bill 2024 be passed. It has been moved that the bill to establish special courts of the adjudication of petitions in respect of immovable properties of the overseas Pakistanis, the establishment of special court overseas Pakistanis property bill 2024 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed unanimously. Congratulations. Order number 11. Senator Azam Nazir Tarar. Please, on his behalf. Yes, sir. I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, on behalf of Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, lay before the Senate the annual report of the observance and implementation of principles of policy 2021 as required under clause 3 of इरफान सिद्दीकी साहब, एक थोड़ा सा रूल्स का मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है. सम मिनिस्टर शुड मूव. ओके, ठीक है. फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप मूव कर दें. अली ज़फ़र साहब, am I right? Thank you, Chairman Sahab. On behalf of Senator Azam Nazir Tarar Sahab,
myself, Mohammed Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, laying before the Senate the annual report on the observance and implementation of Principles of Policy 2020-2021 as required under Clause 3 of Article 29 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Report stands laid. सेनेटर शहरी रहमान साहबा, मैंने साहबा कहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैंने भी साहब कहा है। गुजारिश है कि आपसे मैं इजाज़त और हाउस से लेना चाहती हूँ जी टू मूव मुश्तरका रेज़ोल्यूशन, एक करारदाद जिस पर ये शंघाई ताउन तंजीम के सक्सेसफुल कामयाब इनेकाद के हवाले से एक शॉर्ट रेज़ोल्यूशन है सर। सारी पार्टियों ने साइन किया है सिवाय पीटीआई के, और तो मैं यूनानिमस नहीं कह सकूंगी, मगर आप अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़ के सुना दूँ। जी शुक्र, नहीं कह रही जी, तो आपने इजाज़त नहीं दी? इन्होंने साइन तो कर लिया धड़ से, तो जी बिस्मिल्लाह करती हूँ। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंग्रेचुलेट्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन होल्डिंग एन एक्सेप्शनली सक्सेसफुल इवेंट at the highest level of multilateral engagement in the shape of the SCO Heads of Governments Conference in Islamabad. The success of the conference is demonstrated in both its letter and spirit, indicating a turn in the road for Pakistan's place in the world. We trust that all the progress made at this event will go a long way in Pakistan's growing geo-economic profile and role in enhanced connectivity, regional connectivity, investment, infrastructure, climate and security goals. And I thank you Chairman साहब, इस पे मैं बताना चाहती हूँ कि सारी पार्टियों ने सारे पूरे हाउस ने बिला झिझक साइन किया है। Sorry, with the exception of PTI, I've said it before you came in that you did not sign. I said no, that you did not sign. मैंने आपका नाम भी लिया, तो मैंने इसीलिए कहा कि यूनानिमस नहीं है, आप मुझे इजाज़त दें बोलने की। मैं कह चुकी हूँ कि यूनानिमस नहीं है। एक डॉक्यूमेंट को और आपको प्रॉपर प्रूफ्स प्रोवाइड करने होते हैं कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, उसके बाद ये पासपोर्ट और आईडी कार्ड इशू होते हैं। नादरा कसर जो हमारा सिस्टम है, ये दुनिया के अंदर बहुत बड़े जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत डेटाबेसेस बनाए गए हैं, उनमें से एक सिस्टम है। और बाकी मिनिस्ट्रीज और महकमा जात जो हैं वो भी अपने सिस्टम्स को वेरीफाई करने के लिए नादरा से रुजू करते हैं। सर, हमने फेशियल रिकग्निशन करवानी हो, किसी किस्म की भी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, तो नादरा उसमें अपना किरदार अदा करता है। अगर नूर आलम खान साहब और ऑनरेबल मैडम सहर कामरान साहिबा के नोटिस में कुछ स्पेसिफिक केस ऐसा है जिसके अंदर वो समझते हैं कि कोई नाम या ऐसी इतलात इनके पास हैं कि उसके अंदर नॉन पाकिस्तानीज को ये पासपोर्ट और आईडी कार्ड इशू किए गए हैं, तो ज़रूर हमारे नोटिस में दे दें, उस पर एक एक्शन ले लेते हैं। मगर मेरी जो मालूमात है, अभी हमने ब्रीफिंग भी इस पर ली है, नॉन पाकिस्तानीज को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, नॉन पाकिस्तानीज को किसी किस्म का ना कोई आईडी कार्ड इशू किया जाता है, ना पासपोर्ट इशू किया जाता है। और इसके लिए सर रूल्स भी मौजूद हैं, लॉ भी मौजूद है। एफआरसी का सिस्टम बनाया इसलिए गया था कि पूरा फैमिली ट्री ट्रेसेबल हो, ऑनलाइन ट्रेसेबल हो। और सर हमें भी जब डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं तो हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लगाते हैं ताकि आपकी ट्रेसेबिलिटी हो कि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा की डेटाबेस में मौजूद है। तो इसके होते हुए सर ये बड़ा मुश्किल काम है जो ये कह रहे हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक केस है उस पर हम नोटिस ले लेंगे। इसमें अता साहब मेरा ख्याल है चंद साल पहले कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे, नादरा के अंदर के जो लोग थे जो कि इस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, उनको सस्पेंड भी किया था। ये इट वाज प्रोमिनेंट न्यूज़ उस वक्त, तो होपफुली अब ये बेहतरी आ जाएगी। सर इसमें उसके बाद ही सर ये सारे सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं, तो अभी फिलहाल सर कोई ऐसा मामला रिसेंटली रिपोर्ट नहीं हुआ। वो इंक्वायरी हुई थी, वो कंक्लूड हो चुकी है, तो फिलहाल सर रीवेरिफिकेशन का सिस्टम मौजूद है। आपको नूर आलम साहब लिख के एक देंगे, उसमें 400 लोगों को आइडेंटिफाई करके आप लिस्ट मुझे दें, मेरे थ्रू इनको हम लिस्ट देते हैं जी। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री नॉट प्रेजेंट। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू जनाब स्पीकर।
जनाब स्पीकर, मैं वैसे तो रूल ये कहते हैं कि कैबिनेट का कोई भी हो, लेकिन ऐसा ही मेरा दिल चाह रहा है कि मोहसिन नकवी को एक दफ़ा मैं देख लूँ इस हाउस में। इसके लिए कुछ हो सकता है? मैं मिलवा दूंगा आपको। शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री की हो गया सप्लीमेंट्री? सर अब बात वही है, जो हम सुनने सुनाने को अच्छा लगेगा, अमल दरामद कुछ नहीं होगा ना। हमारे मिनिस्टर साहब भी खड़े हुए, उन्होंने भी कहा कि सेक्रेटरी को बुला लो, जोर सेक्रेटरी पे चल सकता है, तो कभी इनको भी बुला लें ताकि इस हाउस को हम समझ सकें कि हाँ वाकई इस हाउस में सिर्फ और सिर्फ जो एक परसेप्शन बनी जा रही है कि रबड़ स्टैंप है। हम रबड़ स्टैंप नहीं है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम बात करना भी जानते हैं और अपने लोगों के लिए भी बात करेंगे। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि ये एज ए स्टूडेंट ऑफ द हाउस मेरी एक मासूमाना सी ख्वाहिश है। जी ठीक है, मैं उनको एक तो बुलवा भी लूँगा, आपसे मुलाकात भी करवाता हूँ। दूसरा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आके अपने क्वेश्चंस के जवाब भी दें, और क्योंकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं सेक्रेटरी साहब, तो इसलिए हम उनको कर रहे हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी कमेटी में भी नहीं आते। इंटीरियर कमेटी में बारहा हम कोशिश कर चुके हैं कि वो आए कि कुछ इश्यूज हम रिजॉल्व करें, कुछ बातचीत करें, कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेके जाएं। हमारे ऐसे मेंबर्स सर, मतलब अब सीडीए उठा लें तो बहुत से मेंबर ऐसे हैं कि अब इनके लोग हमारे मेंबरान के साथ 1 to 1 हो गए। जैसे आप आलिया कामरान साहिबा को उठा लें, वो प्रिविलेज लेके गई इसी इशू के ऊपर, सुनवाई कहीं नहीं है। सुनवाई जब होगी जब कोई ऑनरशिप होगा। मैं उनको खुद बुलवाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरताज गुल साहिबा। जरताज गुल साहिबा नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन राय हसन नवाज साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद इलियास चौधरी साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मिला साहिबा फारूकी हशाम साहिबा। मेरा सवाल मिनिस्टर साहब से ये है कि ये जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, दिस वाज प्रोमलगेटेड एंड गेजेटेड ऑन अप्रैल 29 दिस ईयर, लेकिन क्या वजह है कि अब तक इसके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो नहीं बन पाए हैं। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी जो FIA की साइबर क्राइम को ख़त्म करके बनाई गई थी। सारे जो एम्प्लॉयज़ थे और स्टाफ थे वो इस एजेंसी में ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन अभी तक उनके पैरामीटर सेट नहीं हुए, कोई रूल्स नहीं है। तो ये तो आवाम सफ़र कर रही है, बिकॉज देयर आर सो मेनी साइबर क्राइम केसेस विच मस्ट बी इन लिम्बो। तो मिनिस्टर साहब जवाब दे सकते हैं कि क्या वजह है इस डिले की? जी अताज साहब। अब जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। सर ये 29 अप्रैल 2024 को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स को प्रोमलगेट किया गया सर, और ऑफिशियल गैजेट में इनको पब्लिश किया गया सर। लास्ट टाइम भी मैंने इस पर गुजारिश की थी कि जब तक इसके एक रेगुलर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं होती, इसकी जो दीगर पोजीशंस हैं इजाज़ साहब, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती। रिक्वेस्ट कीजिए या अंदर बैठ के बात कर लें या तशरीफ रखें प्लीज। थैंक यू। तो सर ये इसके रूल्स प्रोमलगेट कर दिए गए हैं अप्रैल 29 को सर 2024। उसके बाद सर इसके एक रेगुलर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के हवाले से और इसके डिफरेंट केडर्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से मामला जो हैं वो ज़ेर गौर है सर, और विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स इसको मुकम्मल तौर पे फाल किया जाएगा। टिल देन सर जी जो ऑलरेडी साइबर क्राइम की एक विंग है अंडर द FIA वो अपना रेगुलर फंक्शन कर रही है, क्योंकि रूल्स प्रोमलगेटेड हैं। मसला सर चेयरमैन की और ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट का है, जिस पे ऑलरेडी वर्किंग शुरू कर दी गई है। तो विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है इसको मुकम्मल तौर पे फाल कर दिया जाएगा। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब, सप्लीमेंट्री। सर शुक्रिया सर। सर मेरा मिनिस्टर साहब से एक सवाल है। जिस तरह इस जवाब में लिखा गया है कि एक रूल्स बने और एक्ट ने काम करना ख़त्म कर दिया। नाउ एक्ट इज सुपीरियर। एक्ट को तो सिर्फ कौमी असेंबली ख़त्म कर सकती है, रूल्स अंडर द एक्ट बनते हैं। तो एक रूल्स बनते ही एक्ट कैसे बेकार हो गया, नंबर 1 ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये सर
कि जो लाहौर में एक वाकया हुआ इस कौम की बच्ची के साथ, आप एक जानिब लिख रहे हैं कि ये दायरा कार पूरे मुल्क में है, तो उस पर कौन कार्रवाई करेगा? और आखिरी बात कि आखिर साइबर क्राइम की सज़ा क्या है? इतने बड़े वाकयात जो हुए हैं, तो रूल्स किस तरह एक्ट को ख़त्म कर सकते हैं? दायरा कार अगर पाकिस्तान है तो लाहौर क्यों नहीं गया दायरा कार? और नंबर 3 की सज़ा क्या है इसकी सर? थैंक यू। जी मिनिस्टर साहब। एग्जिस्टिंग FIA का विंग था जो साइबर क्राइम को डील करता है सर। दिस कम्स अंडर द पीका एक्ट ऑफ 2016। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, जिसके तहत रूल्स बनाए गए थे कि FIA साइबर क्राइम को डील करेगी। तो उस एक्ट के तहत ही ये रूल्स बनाए गए हैं। उसमें ये स्कोप था कि एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी और ये रूल्स ने डिटर्मिन करना था कि वो FIA करेगी या स्पेशलाइज एजेंसी होगी। तो सर उसी एक्ट के तहत एक रूल ने दूसरे रूल को रिप्लेस किया है। एक्ट को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ रूल्स के हवाले से नए रूल्स प्रोमलगेट किए गए हैं। दूसरा सर, पंजाब के हवाले से जो बात की गई, उस हवाले से कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज किया है कि ये बाकायदा एक साजिश की गई थी, एक झूठा बयानिया बनाया गया था और एक सियासी जमात ने भरपूर कोशिश की कि स्टूडेंट्स की एक एजिटेशन शुरू की जाए। तो वो तमाम हकायक सर ऑलरेडी हम बयान कर चुके हैं, वो अवाम के सामने रख चुके हैं और उस पर पंजाब का जो अपना कानून है, जो उन्होंने डेफेमेशन एक्ट एक बनाया था, उसके तहत वो कार्रवाई भी कर रहे हैं और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई उस प्रोविंशियल लॉ के तहत की जाएगी। और FIA का क्या रोल है इसमें? सर FIA ऑलरेडी साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमें अभी तक इस पर कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई दरखास्त आती है तो FIA सर भरपूर इसमें अपना किरदार अदा करेगी। जी अब्दुल कादिर साहब, ये मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। जी माइक खोलें अब्दुल कादिर साहब। सर इसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि 2016 के तहत नामजद तहकीकाती इदारे के हैसियत से उसने काम करना छोड़ दिया रूल्स बनते ही। इसमें तो ये लिखा हुआ है आपने। तो मैं ये कह रहा हूं कि रूल्स बने, एक्ट ने काम करना छोड़ दिया, जो आप खुद लिख रहे हैं, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप एक्ट को एक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, रूल्स से नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जो कि प्रिंट हो क्या है मैं उस पर बात कर रहा हूं सर। जी अता साहब। जी एक्ट ने एक्ट को रिप्लेस नहीं किया सर। एक्ट के तहत ये स्कोप था कि एक साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी। अब ये रूल्स डिटर्मिन करना है कि वो FIA होगी या कोई और एजेंसी होगी। तो रूल्स जो प्रोमलगेट किए गए हैं वो एक रूल ने दूसरे को रिप्लेस किया सर। बहुत शुक्रिया जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नफीसा शाह साहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नसीम अली शाह साहब। नसीम अली शाह साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शाइस्ता परवेज साहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन शाइस्ता परवेज साहबा। Question number 6. Thank you, Speaker Saab. Question number 6 ये है कि whether the Minister of Interior Mohsin Naqvi or all matters pertaining to Rawal Dam are dealt by Small Dams Organization, Irrigation Department, Punjab. Speaker Saab, हमने इसको विजिट भी किया है। I would like to ask whoever is responsible कि वहाँ पे जितना गंद, जितनी पोल्यूशन, और वो डैम जो है रावल डैम वो सप्लाई करता है इस्लामाबाद को पानी, और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस और जो इरेगुलरिटीज़ और इतना कुछ वहाँ पे है कि दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। सो आई वुड लाइक के द आंसर कि क्या है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वहाँ पे। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, DCO इस्लामाबाद भी इन्वॉल्व हैं, रावल डैम वाले लोग भी वहाँ हैं, बट नोबडी वाज देयर ऑन साइट। सफाई वाले भी वहाँ कोई नहीं थे, और वहाँ पे 125 लोग डिप्यूटेड हैं जिनमें से एक भी वहाँ नहीं था, और वहाँ पे जितना गंद वहाँ पे था दैट वाज नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। जी अता तारसो। ये सवाल से रिलेट करता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है सर, उसके साथ कोऑर्डिनेशन है रावल डैम के हवाले से। मगर फिर भी मैं ये गुजारिश करता चलूँगा कि
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत CDA की पूरी तवज्जो है सर। CDA पूरी तनदही से काम कर रही है और वहाँ पे सर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, रोइंग की एक्टिविटी करवाई जाती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और इसके सफाई का एक स्केड्यूल है सर, जिसके तहत हुकूमत पंजाब के साथ कोऑर्डिनेशन करके CDA बाकायदा वहाँ पे सफाई की एक मुहिम भी रन करता है। उसका स्केड्यूल जो है मैं ऑनरेबल मेंबर साहिबा को गोशगुजार कर दूंगा कि वो क्या स्केड्यूल है जिसके तहत ये जॉइंट सफाई की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है और पंजाब वालों से भी इस पे मज़ीद काम करने के लिए हम यहाँ से हिदायत जारी करेंगे। और CDA ने सर रावल डैम के हवाले से एक टूरिस्ट स्पॉट भी जो है उसको भी इस्टेब्लिश किया है और टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद सर वहाँ पे आती है और उसका नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद की एक मेन अट्रैक्शन है और इस हवाले से मज़ीद जो सफाई के इंतजामात हैं वो भी किए जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर मज़ीद एक्टिविटीज़ को भी जनरेट किया जाएगा। जी सप्लीमेंट्री मीर मुनव्वल तालपुर साहब। सर आई वुड लाइक टू रेज दिस इज़ वेरी सम कंफ्यूजिंग, जो ये आपने 2 इधर भेजे हुए हैं मैं क्वेश्चन आंसर्स, इसमें सर कोई भी सीक्वेंस नहीं है, लाइक 61 फिर 102 फिर जो आता है सवाल 189 जी, और ये अब आप कहेंगे ये ड्रॉप किए हुए सवाल हैं। ड्रॉप किए हुए सवाल सर ये 2 किताबें बुक्स यहाँ हमारे सामने पड़ी हुई हैं, तो एटलीस्ट उसके ऊपर मेंशन हो कि ये पहले के सेशन के ड्रॉप किए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर नहीं हुए थे। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, ये तो नए क्वेश्चंस हैं या जो आगे 9th से रेफर हुए हैं ना तालपुर साहब, ये 9th वाले से जो है ना वो सर ये देखिए ना, ये 2 है, 2 के बाद 23 आ गया, 23 के बाद सर ये आ गया आपका। आप अनस्टार्ट की बात कर रहे हैं, स्टार्ट की बात कर रहे हैं? क्वेश्चंस की सर, क्वेश्चन एक पे स्टार्ट लिखा होता है, एक पे अनस्टार्ट होता है। एक पे स्टार्ट होता है, एक पे अनस्टार्ट। इजाज मुझे कुछ समझा रहा है, अब लेट हिम कम टू मी, कम हियर जी, जाओ इजाज जाएं जी। नबील गबोल साहब सप्लीमेंट्री। यहाँ पर तकरीबन 95% क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू इंटीरियर मिनिस्ट्री है जी। आपने बहुत अच्छी रूलिंग दी, इंटीरियर सेक्रेटरी को आपने बुलाया और जो मुझे पता चला वो आपके ऑफिस में बैठे हैं। मेरा सवाल ये है जो कि मैं ये चाहूँगा हमारे अता तारड़ साहब, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ इंटीरियर का, और ये इशू मैं उठाऊँगा स्टैंडिंग कमेटी में कि हमारे मिनिस्टर साहब तो आते नहीं हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर साहब कोई स्टेट मिनिस्टर लगा दें या पार्लिमानी सेक्रेटरी इंटीरियर का कोई बना दें। अता तारड़ साहब को ही ऊपर सारा बोझ डाला हुआ है। मैं खुद मेंबर ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर, मैं 2 दिन तक यहाँ पे यरगमाल था, पार्लियामेंट लॉजेस में बंद था, खाने बंद हो गए थे, यहाँ तक कि लंच और डिनर में अंडों पे गुजारा कर रहा था। ये जो पिछला जो है 2 दिन तक जो है यहाँ पर ये जो एहतजाज हो रहा था, एहतजाज अपनी जगह बहुत छोटा था, एहतजाज में असर नहीं था, एहतजाज करने वाले खुद भाग गए थे, एहतजाज करने वाले खुद ड्रामेबाजी करके इधर उधर निकल गए, लेकिन हमें जो है सील कर दिया पूरे इस्लामाबाद को, हमें बंद कर दिया कंटेनर सिटी बनाकर। इसका जवाब चाहिए कि भाई इतना कमजोर इंटीरियर जो है मिनिस्ट्री को नहीं होना चाहिए कि अपने आप को खुद बंद कर दे। ये तो वही बात हुआ कि शेर बाहर घूम रहा है और अपने को पिंजरे में बंद कर दिया, ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। जी शाइस्ता साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब इस वक्त गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वह रोइंग और वो सब बंद हो चुकी है। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिसका स्वेज का पानी भी उधर आ रहा है, बनी गाला का पानी भी वहीं आ रहा है गंदा, और वहाँ पे हर किसी और फिल्ट्रेशन प्लांट इज नॉट फुली वर्किंग। ये लोग वहाँ से पानी लेते हैं, अपनी लैब्स में टेस्ट कराते हैं और रिजल्ट बता देते हैं, जबकि देखने में नजर आ रहा है कि पानी का क्या हाल है। सो आई हैव, अभी 2 दिन हुए हम विजिट करके आए, वहाँ कोई रोइंग कोई रिक्रिएशन नहीं है, दैट हैज बीन क्लोज्ड, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे सीवरेज का तमाम गंद, तमाम पानी, वो जो वहाँ पे गवाले हैं, भैंसे, उनका पानी भी। अब इनसे पूछते हैं जी, बताएं अता साहब। सर मेरे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है सर। मैं 3 दिन पहले SCO का सिक्योरिटी सॉर्टी एक हो रही थी हेलीकॉप्टर पे सर, मैंने खुद वहाँ पे रोइंग विटनेस की है। मैं तमाम तर डिटेल्स ऑनरेबल मेंबर साहिबा को, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉन्ट्रडिक्ट किया है, मैं रिस्पेक्टफुली इनको सबमिट करूंगा, सीनियर मेंबर हैं,
ये रोइंग एक्टिविटीज हर रोज हो रही हैं सर। रावल लेक इज बीइंग फुली यूटिलाइज, हमारी रोइंग टीम वहां पे बकायदा तौर पे ये रोइंग एक्टिविटीज में हिस्सा ले रही है। अगर मैंने खुद विटनेस ना किया होता, लिखा हुआ जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने खुद विटनेस किया था, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं हाउस के अंदर इसका जवाब दे दूं। रोइंग एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, अगर चाहेंगी तो हम इनको रोइंग भी करा देंगे वहां। वो 2 हफ्ते पहले की बात कर रही हैं आप, आज करके आ जाइए, फिर कल बताइएगा आके हमें। आप 2 हफ्ते पहले गई हैं ना, ये पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जुबैर खान वजीर साहब। जुबैर खान वजीर साहब नॉट प्रेजेंट। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। मैं स्पीकर साहब एक तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि इस इशू पे आपने मुझे सपोर्ट की हमेशा, जब भी मिनिमम वेज के हवाले से कोई भी बात हो। जनाब मैंने तमाम वजारतों को मिनिमम वेज के हवाले से ये क्वेश्चन डाला कि जी मिनिमम वेज के हवाले से आप ये पाबंद करें कि तमाम कम से कम उजरत जो है वो जनाब स्पीकर 40,000 में भी 2 बच्चे 1 मियाँ बीबी अपने घर पे रहते हो, आप इनका बजट नहीं बना सकते एक महीने का। लेकिन चूंकि अब जैसे है जिस हाल में है उस हाल में जो अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर, और हम सब खुश हुए, हमने बड़ा यहाँ पर डाइस बजाए। लेकिन जनाब स्पीकर होता ये है कि जिस मर्जी वजारत के पास आप चले, जिस मर्जी महकमे में चले जाएं, उनके पास सिंपल सा एक जवाब है कि जी हम बोर्ड को भेजेंगे। अच्छा जनाब, जब बोर्ड में इन अफसर शाही का कोई इशू हो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं सर। अर्दली अनाउंस जो ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान को मिलते हैं, उसमें उन्होंने एक फैसला किया है यूनिवर्सिटी के बगैर किसी बोर्ड की, जब जैसी वो बढ़ेगा अर्दली का अलाउंस, तो आपको बोर्ड की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि गरीब आदमी की बात है, यहाँ जो है 22 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़ तो मैं नहीं कहूँगा, उन लोगों की बात है, तो ये बहाने उल्ले से करके बोर्ड के बहाने लेते हैं। सर आज 6-7 महीने हो गए, उन जिन गरीबों को हक नहीं मिल रहा, तो हमारा क्या फायदा फिर इस हाउस में बैठने का कि अगर हम उन गरीबों को भी उनका हक नहीं दिलवा सकते। और बारहा मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने फाइनेंस कमेटी में ये इशू भेजा भी है। लेकिन सर ये देखें, ये मिनिस्ट्री खुद कह रही है कि जी ऐसा ही हमने बोर्ड में भेजा है। मतलब आपके बोर्ड के इंतजार में और आपके बोर्ड के मेंबरान की अय्याशी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वेज 37 के लिए खुदारा एक रूल जारी करें कि ये बोर्ड की इस चीज के लिए बोर्ड की अप्रूवल नहीं चाहिए। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कैटेगोरिकली प्राइवेट हर इदारा ये पाबंद है कि गरीब आदमी को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, तो फिर बोर्ड की क्या जरूरत है? जी किरण डार साहबा, आप सब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जवाब दीजिए। मगर रफ़ीउल्लाह साहब, ये इनको मिलेगा इंशाल्लाह, और ये मिलेगा 1 जुलाई से लेके मिलेगा, एरियर्स भी इंशाल्लाह मिलेंगे। इनसे हम जवाब भी ले लेते हैं, अगर ना हुआ आई विल टेक इट अप विद यू। जी किरण साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब, और थैंक यू मेरे कोलीग जिन्होंने इस पॉइंट के ऊपर किया। जहां बोर्ड की बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बोर्ड भी बाउंड है। जो पीएसबी जो आईपीसी के अंदर जो बोर्ड आता है वो बाउंड है कि जो हुकूमत ने जो वेजेस डिसाइड किए हैं 37,000 वो दें। अभी जो फाइनेंस की तरफ से हमें लेटर आया वो 25 अक्टूबर को आया है, और मैं अपने आईपीसी की बात करूं तो 2 अक्टूबर को इस पे इम्प्लीमेंट हो गया। और आपने मुझे कहा था सैलरी स्लिप के बारे में, मैं पिछले साल की ज़रूर 32,000 वाली सैलरी स्लिप इस वक्त लेकर आई हूं, लेकिन क्योंकि अभी वो सैलरी जनरेट नहीं हुई क्योंकि 2 अक्टूबर को था, और उसके लिए 1 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी बोर्ड की बात है पीएसबी की, तो पीएसबी में कोई भी एम्प्लॉय जो है वो 37,000 रुपीज़ से कम नहीं था। इसीलिए जो जवाब आया है, एक तो मैं उस जवाब को भी कहूँगी कि कोई मेंबर था ही नहीं, कोई एम्प्लॉय जो है वो था ही नहीं 37,000 से नीचे कि जिस पे ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था वो इम्प्लीमेंट होता। थैंक यू। ये बजट में हो गया था अनाउंस, तो ये तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सप्लीमेंट्री तायरा साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब, मैंने तो अता तारर साहब के क्वेश्चन पे बटन दबाया था। थैंक यू
लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इन्हें, चूँकि शंघाई कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है अभी अभी, इन्हें हर तरफ खूबसूरती और फूल नज़र आ रहे हैं। मैं जब वहाँ गई तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक था, कचरा ही कचरा था। हमारे साथ हमारी चेयरपर्सन थी मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, हम पूरी कमेटी थी, लेकिन इनकी आंखों में हमारी आंखों में मनाजर का फ़र्क है। हम चूँकि शंघाई कॉन्फ्रेंस दूर से देख रहे थे, ये पास से देख रहे थे, इतना सा फ़र्क था, वरना था वहाँ वो कुछ नहीं जो ये बयान फरमा रहे हैं। थैंक यू। और आपने तो ऐनक भी पहनी हुई है करीब से देखने के लिए। जी रफ़ीउल्लाह साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं सिर्फ इतनी जिसारत कर रहा हूँ, आपने कहा कि जिस दिन से ये ऐलान हुआ है उन तमाम लोगों को 37 के हिसाब से पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह। 1 जुलाई, जो चूँकि यहाँ आपको याद है बजट के दौरान ये चीज़ डिस्कस हुई थी, तो फाइनेंस एक्ट में ये है, ये 1 जुलाई से इंशाल्लाह मिलेगी 37,000। जितनी लेट मिलेगी एरियर्स मिलेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आप किरण साहबा, ताहिरा साहबा का जवाब देंगी? जी अच्छा, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी मैं ये क्वेश्चन पूछना नंबर, चाहता हूँ मिनिस्टर आपसे, ये जो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन नंबर 9, आंसर भी टेकन एज रेड, अब सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मैंने पूछा था कि ममालिक बताएं, फील्ड्स बताएं और क्राइटेरिया बताएं कि जो हमारे यहाँ ऑफ़र्स हैं दुनिया भर से एम्प्लॉयमेंट्स की, तो उसमें किन किन जगहों से और क्या 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 क्राइटेरिया। वजह इसकी ये थी कि देखिए आज इस वक्त जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं हमारे, वो हमारी एक्सपोर्ट के तकरीबन बराबर है 31 अरब डॉलर। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जो दुनिया भर से आ रही है, और अगर हमने इसकी तैयारी नहीं की, तो हम ये अपॉर्चुनिटी ये बस भी मिस कर देंगे। तो ये जो भी रिक्वायरमेंट आई उसकी जो एक बड़ी वेग सी एक पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई मिनिस्टर साहब अगर बताना चाहें कि क्या हमने कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजिक प्लान बना रखा है कि जिस तरह के रिक्वायरमेंट है उसके वोकेशनल सेंटर्स बना रहे हो यहाँ पे, उस तरह के मजदूर भेज रहे हो बाहर, और कहाँ कहाँ से किस किस शोबे में। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो नर्सेस की डिमांड है दुनिया भर में 20 लाख नर्सेस की, तो हमने क्या, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमने क्या तैयारी की है कि हम दुनिया के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। जी चौधरी सालिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तकरीबन जी 166 ममालिक से जो है वो डिमांड्स आई हुई हैं जी, और क्योंकि ऑनरेबल मेंबर ने फोकस किया ऑन नर्सेज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि पाकिस्तान में एक एग्ज़ाम होता है NCLEX, जो UK, US, ऑस्ट्रेलिया और चंद ममालिक में रिक्वायर्ड है नर्सेज के लिए। वो पाकिस्तान में एग्ज़ाम होता ही नहीं था। तो आपको ये खुशी होगी जान के कि इंशाल्लाह पहली दफ़ा दिसंबर में वो एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है, और तकरीबन 100 नर्सेज जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं जी उसमें, मेल एंड फीमेल। तो ये सहूलत यहाँ पे दी जा रही है। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और ये जो NAFTAC है जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। हमारी उनके साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रही है, और जो डिमांड्स आ रही हैं वो हम उनके सामने रख के उसी तरह की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जी मास्टर ट्रेनर्स भी हमने बुलाए हैं जी, और इसको अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये है कि स्किल और सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो बाहर जाए, बजाय इसके कि सिर्फ लेबर, क्योंकि दुनिया की भी डिमांड चेंज हो रही है। हर मुल्क की अब जो डिमांड है वो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर की है। तो उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए जी अगले आप देखेंगे 6 महीने में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और हम उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के क्योंकि ये अंडर आता है, तो हमने एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें दोनों मिनिस्ट्रीज़ इकट्ठे मिलकर काम कर रही हैं, ताकि हम अपनी स्किल डेवलपमेंट को इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक लाया जा सके। जो आपके पास डिमांड आती है उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड का रेशो क्या होता है? स्किल्ड ज़्यादा आती है डिमांड? नहीं जी, अनस्किल्ड की जी अनस्किल्ड ज़्यादा है, और ज़्यादा क्योंकि मिडल ईस्ट से आ रही है। अब हम खुद उनको अप्रोच करके ये कह रहे हैं कि जी हमें आप स्किल्ड और सेमी स्किल्ड की कैटेगरीज़ में भी कंसिडर करें। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, आई थिंक ये आधा क्वेश्चन आपका उन्होंने जवाब दिया, बाकी वाला पोर्शन जो है वो रिपीट कर दीजिए ज़रा मुस्तफ़ा। मेरी गुजारिश में साहब से ये है कि मैंने तो नर्सेस की एक मिसाल दी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, नुक्ता नज़र, कि देखिए हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी एजुकेशन सेंटर्स जो हैं वो बेरोज़गार नौजवानों को प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हैं। हम डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं हमारे लोग। मेरी इंटेंशन ये इनसे गुजारिश ये है कि जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है
हम अपने बच्चों को वो तालीम दें जिसकी वजह से उनको जॉब्स हासिल हो सकें। तो इनकी मिनिस्ट्री का और एजुकेशन का, पाकिस्तान के सूबाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डेस्क आप अपने एजुकेशन सेंटर्स पे आप एम्प्लॉयमेंट डेस्क बनाएं, उसकी तैयारी करें। ये मेरी इंटेंशन है कि 5 लाख अगर फर्स्ट करें रिक्वायरमेंट आई हुई, इन्होंने जवाब दिए 5,06,000 लोग जो है वो चाह रहे हैं, दुनिया चाह रही है। अब उसकी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिसने अप्लाई कर दिया और कोई अवेयरनेस भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश मिनिस्टर साहब से ये है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, कि इसकी एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाया जाए इसका। और मैं वो जानना चाह रहा था जो कि नहीं है, इस वक्त नहीं है। तो हमारी एजुकेशन और दुनिया की एम्प्लॉयमेंट के दरमियान का ये जो गैप है, इसको ब्रिज होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई मीन। जी सालिक साहब, सजेशन ज़्यादा है उनका। जी बिल्कुल जी, मैं चाहूँगा ऑनरेबल मेंबर के साथ अलहदा भी बैठ के डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि जो 3 सवालात थे उसमें ये वाला इन पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था कि हम इक़दामात ऐसे क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर हम अलहदा भी बैठ जाएँ, मैं इंशाल्लाह ताला इनसे अभी मिल भी लेता हूँ, ठीक, और इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देंगे कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। मौलाना गफूर हैदरी साहब, सप्लीमेंट्री। जनाब स्पीकर, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो सवाल उठाया है उसको आगे लेकर चलने की कोशिश करूँगा कि बैरूनी दुनिया जो हम अपने लोग भेजते हैं या वहाँ से डिमांड आता है, तो उसमें तरीक़ेकार क्या है? क्या मुलाजिमीन जो बाहर भेजते हैं या लोग बाहर भेजते हैं तो सूबों से लेते हैं, कोटा वाइज है, या फिर जहाँ से जी चाहे लोग लेते हैं और उनको भेजते हैं? तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के हवाले से जो एक पसमानदा तरीन सूबा है, वहाँ से कितने लोग अब तक भेजे गए हैं, और उसकी अगर कोई रिपोर्ट या तफसील है तो मिनिस्टर साहब हमें बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जी चौधरी सालिक साहब। जी इस वक्त एग्जैक्ट डिटेल बलूचिस्तान की नहीं है जी, लेकिन ऑनरेबल मेंबर सही कह रहे हैं कि सबसे कम जो तादाद है वो बलूचिस्तान से ही जाती है लोगों की। और इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है जी। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, जैसी क्राइटेरिया बेसिक ये है कि जो डिमांड होती है उसको वेरीफाई किया जाता है जी। वेरीफाई करने के बाद परमिशन दी जाती है और एडवर्टाइज़ किया जाता है जो जॉब्स हैं। उसके बाद जी सिलेक्शन प्रोसेस है एक OEP का अपना। मिनिस्ट्री जो है वो मेक श्योर करती है कि जो डिमांड आई हुई है OEP उसके मुताबिक जो है वो लोगों को तैयार कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और फाइनली जी फिर उनका रजिस्ट्रेशन होती है जी, एक फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट होता है, और ये एक प्रोसेस है जी जो ऑलरेडी लेड डाउन है। लेकिन इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है जी वही डिमांड भी लेके आता है और मिनिस्ट्री जो है उसको रेगुलेट करती है। बलूचिस्तान का कोई तजवीज़ दीजिएगा कि वहाँ के जो नौजवान हैं उनको किस तरह अकोमोडेट किया गया? जी ठीक है। ख्वाजा इज़ारुल हसन साहब, सप्लीमेंट्री। ख्वाजा इज़ार साहब। जी ख्वाजा साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने रेज़ किया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ बड़ी मिनिस्टर साहब क्लैरिफिकेशन दें। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, पूरे पाकिस्तान में एजेंट्स मौजूद हैं, वो एजेंट्स 6-6 महीने पहले पासपोर्ट्स ले लेते हैं वर्कर से, और वो एजेंट्स 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए अपफ्रंट ले लेते हैं, और ये बताते हैं कि जनाब अभी वो मिनिस्ट्री में इश्तिहार आएगा, और 6-6 8-8 महीने उन गरीब लोगों का पासपोर्ट और पैसा रखकर फिर उसके बाद यहाँ से उनको रवाना करते हैं, और वहाँ पर भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता लेबर्स का। मैंने दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, ये खुद मैंने वहाँ विज़िट किए हैं, वहाँ पे लोगों की मैंने जो बदहाली है वो देखी है। तो मिनिस्ट्री का इस पे क्या कंट्रोल है कि एजेंट क्या रखना ज़रूरी है? बराह रास्त मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर सकती? और अगर एजेंट रखना ज़रूरी है
तो उन्हें एजेंट की अकाउंटेबिलिटी और उनको क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि वो ये अपफ्रंट ना लें, 6-6, 8-8 महीने से पासपोर्ट रख के ना बैठे। जी सालिक साहब। जी बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया जी इन्होंने, और इसके लिए हमने एक नया मैकेनिज़्म बनाया जी। जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके साथ हम दोबारा से एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। 1200 लाइसेंसेस हमने कैंसिल भी किए हैं अभी रिसेंटली, और अब उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले रहे हैं कि जो वो कमिट करते हैं वर्कर के साथ या उस आदमी के साथ जिसको बाहर भेज रहे हैं, आया वो रिक्वायरमेंट जो उन्होंने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक है भी या नहीं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि उनसे एक सर्टन सैलरी कमिट की जाती है, लेकिन जब वर्कर वहाँ पे जाता है तो वो काफ़ी हद तक कम होती है। इसी तरह ही उनकी जो रिहाइश की भी अगर कोई उनसे कमिटमेंट हुई भी है कि एक कमरे में 2 लोग होंगे तो वहाँ 6-6 लोगों को ठहराया जाता है। जो भी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमने बहुत स्ट्रिक्ट मैकेनिज़्म बनाया कि उनका लाइसेंस फौरी कैंसिल किया जाएगा, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले नहीं लिया जाता था, सिंपल एक ID कार्ड के ऊपर ही कंपनी को लाइसेंस दे दिया जाता था। हमने रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया जो है अब टफ बना दिया जी, इसीलिए ताकि इस तरह के लोगों को जो लोगों को मिसयूज़ करते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। जी नेक्स्ट और क्वेश्चन। दूसरा इनका एक क्वेश्चन था जी कि गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं ये काम कर लेती। तो उसके लिए हमने अपना जो हमारा OECA के इदारा है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, उसको एक्टिव किया है, और जितनी भी कोरिया की डिमांड है वो मिनिस्ट्री की तरफ से ही रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है। यूरोपियन यूनियन भी उसमें इंटरेस्टेड है, जापान भी उसमें इंटरेस्टेड है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट भी इस काम को किया जा सके और लोगों को जो है वो स्कैम ना किया जाए। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। सर इसका तो जवाब ही मौसूल नहीं हुआ, जबकि बड़ा मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साहब, ये डिफेंस मिनिस्ट्री से जवाब नहीं आया, काइंडली उनको ये कहिए कि जी ये इस वक्त, हालांकि ये फ्रेश क्वेश्चन है मगर जवाब नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10। ये डिफेंस का रिप्रेजेंटेटिव बैठे। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मैं उनको क्वेश्चन रेज करने दूं या अभी इसको डेफर कर दें फिर आप? नहीं, आप मैं इसका टेलीफोन के ऊपर पता करके कल आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रोटा डे पे हम डेफर कर दें। आई एम सॉरी कि आज जवाब मौसूल नहीं हुआ, मैं उसका रीज़न भी पता कर लूँगा, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और कल इसका टेलीफोन में पता करके कल इसके जवाब हम नेक्स्ट रोटा डे के लिए कर लेते हैं जी। थैंक यू। नेक्स्ट शाहिदा रहमानी साहबा। शाहिदा रहमानी साहबा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 11। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। स्पीकर साहब, वज़ीर दाखिला साहब के काफ़ी सवालात हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, स्पेशली वीमेंस एंड गर्ल्स के। खुद मिनिस्ट्रीज़ जो है इसको एडमिट कर रही है कि सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिकिंग ख़वातीन की और बच्चियों की हो रही है। और इसके साथ ये भी कि मैं समझती हूँ कि जिस तरह सूबों के अंदर पाकिस्तान का एक सूबा है, सूबा सिंध, जहाँ 18th ईयर की शादी के लिए कंपलसरी है, लेकिन दूसरे सूबों में और कैपिटल टेरिटरी में ये कानून ना होने की वजह से पहले सूबा सिंध से लेकर दूसरे सूबों में लाया जाता है, उसके बाद उन्हें जो है दूसरे कंट्री जो है वो स्मगल किया जाता है। तो सर क्यों नहीं हम इस कानून को जो है तमाम सूबों में और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर भी इसको नाफिज करें ताकि इस तरह के अवामिल जो हैं उससे बचा जा सके। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें दुआ ज़हरा का केस इसी नौयत का था कि उसे पहले सिंध से ला के पंजाब में शादी की गई, शादी करने के बाद उसे स्मगल करने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीज़ें जब मिनिस्ट्री एडमिट कर रही तो हम इस तरह की कानून साजी पर क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं? साहब। बहुत शुक्रिया सर। एज फार एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज कंसर्न सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ना सिर्फ मर्द हरजात बल्कि ख़वातीन और बच्चे सर इक्वली इफेक्ट होते हैं, और इसके अंदर सर उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है और उनसे बॉन्डेड लेबर भी कराई जाती है।
तो जो 2017 के फिगर्स हैं उस हवाले से तो रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, मगर 2023-24 की जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक सर 70% जो है इसमें खवातीन का रेशियो था, जो विच इज़ ऑलमोस्ट 24,000 सर। तो ये 2023-24 के फिगर्स के अंदर ये रेशियो आया है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो ऑनरेबल मेंबर साहिबा को हम गोशगुजार भी कर रहे हैं सर। उसके साथ साथ जो TIP की रिपोर्ट है सर, टोटल जो विक्टिम्स हैं वो 34,000 थे। इस हवाले से अगर कानून साजी में मजीद इसको मौसर बनाने के लिए कोई तजावीज़ ऑनरेबल शाहिदा रहमानी साहिबा की तरफ से आती हैं वो ज़रूर सबमिट करें। कानून ऑलरेडी मौजूद है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं और इस हवाले से सर FIA भी मुकम्मल तौर पे फ़ाल है, मगर अगर कानून में मजीद बेहतरी लाने के लिए, मॉनिटरिंग सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए कोई तजावीज़ हैं तो वो मिनिस्ट्री तक पहुँचा दी जाएंगी और उस पर अमल दरामद करा दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री ज़ारा वदूद फातमी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि वो कहते हैं कि इसकी अवेयरनेस भी दी जा रही है, मुझे तब तक कहीं भी नज़र नहीं आती है कौन सी अवेयरनेस किधर हो रही है और कब हो रही है। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सवाल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ मुल्क से बाहर ही नहीं होती है, मुल्क के अंदर भी होती है। अगर आप देखें तो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस से ये उठाकर ले जाते हैं और हर सड़क और हर गली में आपको नज़र आते हैं ये औरतें जो भीख मांगती हैं। हर औरत के गोद में एक बच्चा भी होता है। आखिर ये इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई काम करती है? इसके ऊपर करना चाहिए क्योंकि कोई सा माफिया ज़रूर इसके पीछे है और उसको ख़त्म करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया जी। अता साहब। 12वीं तरमीम के बाद जो इंटर प्रोविंशियल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मोहतरमा बात कर रही हैं वो सर प्योर सूबे के डोमेन में आता है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है और ये सूबों की जिम्मेदारी है कि अगर सूबों के दरमियान कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसको देखा जाए। बैनुल-अक़वामी सतह पे बॉर्डर्स को क्रॉस करना, एयरपोर्ट्स के थ्रू, सी पोर्ट्स के थ्रू इस मामले को करना वो फेडरल गवर्नमेंट के ज़ुमरे में आता है और उसके लिए सर FIA ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को चेक भी करती है और एयरपोर्ट्स के ऊपर भी कार्रवाइयाँ करके इन लोगों को जो है वो वापस भेजा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कानून साजी की जो बात हुई है इसको मौसर बनाने के लिए इस पर काम मजीद हो सकता है। इसके लिए कोई रिकमेंडेशन ज़रूर बताएं, मगर सूबाई मामलात जो हैं उसमें मुदाखलत नहीं बनती। बाकी FIA इस पर भरपूर एक्शन भी कर रही है और FIR भी रजिस्टर कर रही है और इसके जो रैकेट्स हैं, गैंग्स हैं, उनको भी बस कर रही है साथ साथ। जी। सप्लीमेंट्री निकत शकील साहबा। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल वज़ीर साहब से ये है कि हमें यहाँ पे उन्होंने फिगर्स और परसेंटेज बता दी है कि इतनी परसेंटेज है, हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें तो इनके स्टेप्स चाहिए कि ये क्या स्टेप्स ले रहे हैं इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट। प्लस ये कि इतने बच्चे आजकल हम देखते हैं कि अगवा किए जाते हैं और उनको मारकर फेंक दिया जाता है, उनके ऑर्गन्स जो है उनकी बॉडी से निकाल लिए जाते हैं। तो सर हम ये कह के कि ये प्रोविंशियल मैटर है, हम आंखें नहीं बंद कर सकते और हम इस चीज़ से अलग नहीं हो सकते। ये इनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि ये क्या मेजर्स ले रहे हैं। जी। अता साहब। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ करता है जिसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान को रिव्यू किया जाता है। ये अगर सजेशन आई है वहाँ पे चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और IG मौजूद होते हैं। अगर मोहतरमा बेहतर समझती हैं तो ये तजवीज़ हम सामने रखते हैं कि इसको भी एजेंडे में शामिल किया जाए और जो इंटर प्रोविंशियल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसका भी नोटिस लिया जाए। तो नेक्स्ट एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग होगी सर मैंने नोट कर लिया है, तो इसको एजेंडे में शामिल कर लेंगे और सूबों को इस हवाले से सेंसिटाइज भी करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हाजिर है, अगर कोई अवेयरनेस कैंपेन चलानी है तो हम इस पर एक भरपूर अवेयरनेस कैंपेन चला के नेक्स्ट वीक इसको हम ऑनर कर देंगे। जी थैंक यू। शगुफ्ता जमानी साहबा का ट्रांसफ़र हो गया फॉरेन अफेयर्स को, तो वो नेक्स्ट रोटा डे पे आ जाएगा। आलिया कामरान साहबा। जी मोहतरम, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जी मोहतरम, ये CDA की जानिब से जो मुझे जवाब दिया गया है बड़ी पुरुम्मीद सी तस्वीर इसके अंदर सर पेश की गई है। सवाए एक प्रोजेक्ट जो है सर अलीपुर फराज टाउन वाला उसका एडमिट किया गया है। मोहतरम 31 मई 2023 को इस हाउस के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि G11 में ख़वातीन के लिए जो एक मखसूस बाज़ार बनाया गया है वो फंक्शनल क्यों नहीं हो पा रहा।
तो मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने उसका जवाब दिया था और ये एतराफ़ किया था कि 7 करोड़ रुपए की ख़ती रकम खर्च की गई इस बाज़ार के ऊपर, और ये बाज़ार क्योंकि 11th एवेन्यू के रास्ते में जो है रुकावट बन रहा था, इसलिए जो है इस बाज़ार को ख़त्म कर दिया गया। मोहतरम इसी तरह से एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जो है यहाँ पर एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया, रुकावटें खड़ी कर दी गई और अभी तो वो भी हमें ख़त्म नज़र ही नहीं आता कि वो कोई साइकिलिंग ट्रैक है या नहीं है। सर इसी तरह से मेट्रो बस स्टेशंस जो हैं वहाँ पर जो सर्विस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हायर की गई थी वो 1 माह चली और उसके बाद ख़त्म हो गई। सर मेरा जो ये सवाल था उसके जवाब के अंदर तो बताया गया कि सब कुछ बड़ा अच्छा है, तो मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर ये है कि ये जो जवाब दिया गया है इसमें इस अवान से हकाइक सीडीए ने जानबूझ के छुपाए हैं और उन हकाइक को अवान के सामने नहीं लेके आया। सर ये जो नाकिस कारकर्दगी है सीडीए की, क्या उसके ऊपर सीडीए को जवाबदेह नहीं होना चाहिए, या जो इस तरह के प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं हो पाए या जिनके ऊपर इंतहाई खती रकम खर्च करने के बावजूद भी हमारे सामने वो रिजल्ट नहीं आ पाए, क्या उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? सर ये इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मैं फहरिस्त आपको फराहम कर सकती हूँ, तो मोहतरम ये मामला जो है कमेटी को भिजवाइए और इसकी मुकम्मल जो है छानबीन करवाइए। जी अता साहब। सीडीए तैनात किए गए बड़े काबिल अफसर हैं, उन्होंने आके काफ़ी जो है महकमे के अंदर रिफॉर्म्स भी लेके आए हैं। जो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट अलीपुर फराज की बात की जा रही है उसमें सर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मुलविस थी और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने पेमेंट्स बर वक्त नहीं की, एमओयू को वायलेट किया, जिस वजह से उसकी जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो रुक गई। ये प्रोजेक्ट सर 66% कंप्लीट है और बाकी अभी रुका हुआ है ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया गया। इसके अलावा सर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये नई रोड है, मारगला रोड की एक्सटेंशन है टुवर्ड्स बरी इमाम सर, ये अगले 2 महीने में कंप्लीट होगी, इस पर तेज़ी से काम जारी है। इसके अलावा सर एक मिनिस्टर इंटीरियर ने कंसीव किया है सरीना से एक अंडरपास जो जाएगा जिना कन्वेंशन सेंटर, जो ओरिजिनल प्लान में इंक्लूडेड था फंक्शंस के लिए और हमारे फॉरेन गेस्ट के लिए। इसके अलावा यू टर्न्स का, फ्लाईओवर्स का और अंडरपासेस का एक मुकम्मल तौर पे प्लान बनाया जा रहा है। उसकी बहुत जल्द जो है वो मिनिस्टर इंटीरियर ग्राउंड ब्रेकिंग भी करवाएंगे। तो सीडीए को सर एक बिल्कुल नए अज़म के साथ चलाया जा रहा है। अभी जो एससीओ के इंतजाम किए गए सर, पूरा जिना कन्वेंशन सेंटर रिफर्बिश किया गया है इन अ मेयर स्पैन ऑफ 2 मंथ सर, और वो जो मंजर पेश किया गया है वो भी काम सीडीए ने किया ना सर। जहां हम सीडीए पे तनकीद करते हैं, हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अगर सीडीए ने कोई अच्छा काम किया उसको हम सराहें भी, उसको अप्रिशिएट भी करें। तो ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल थी सर। बाकी अली रंधावा साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो अनफिनिश प्रोजेक्ट के हवाले से बात की गई है इसकी लायबिलिटीज क्लियर होंगी ताकि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। अता साहब इसमें एक देखें नुकसान तो हो गया ना, 66% पे रुक गया। रुकने के बाद जो नई उसमें एस्केलेशन आएगी वो कौन जिम्मेदार होगा? सर अब कॉस्ट एस्केलेशन बहुत आ गई इस प्रोजेक्ट में और इसके लिए सर कोई कमेटी अगर बना दी जाए, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कहूँगा एक कमेटी बना दें। इसको हम भेज देते हैं इंटीरियर की कमेटी को ताकि 66 खर्च हो गया। अब अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो वो सारा जाया हो गया। ये अगर कंप्लीट होगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा, तो किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी पड़नी चाहिए। सर ये कमेटी को रेफर कर दे, मेरा ख्याल इसका हल निकल आएगा सर। जी कमेटी को रेफर कर देते। मेरीन रजाक भुट्टो साहिबा। मेरीन रजाक भुट्टो साहिबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 14। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मेरा सवाल जो है वो E12 के हवाले से है सर। ये सेक्टर सीडीए ने सर कोई 30 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया था और सर अभी पता चला है कि 30 साल के बाद अलॉटीज़ के ऊपर 101 गज के ऊपर 9,000 की पेनल्टी लगा दी गई है। सर वहाँ पे किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है और मुझे सवाल के जवाब में बताया गया है कि लिटिगेशन का मामला था, लेकिन सर उन लोगों अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी मैरीन साहबा थैंक यू सप्लीमेंट्री मिस्टर आप कर रही स्पीकर। थी। सर मेरा सर ये गुजारिश थी कि अगर 30 साल के बाद इन अलॉटीज़ पे ये अनजस्टिफिकेशन जो एक इम्पोज की गई है सीडीए बोर्ड की तरफ से, सर मुझे क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, और सर जिन्होंने 30 साल पहले ये पेमेंट्स जमा कराई हैं और उस टाइम सर डॉलर की कीमत क्या थी और क्या आज उसकी वर्थ है। अगर सर इस सवाल में बताया गया कि इस प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी, जिन लोगों ने घर बनाने के लिए सर अगर ये प्लॉट लिया है तो सर आज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ चुकी है। सर आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए डिलेज़ की। तो सर आपने जो पहला सवाल रेफ़र किया, सर अगर ये सवाल भी आप इसकी डिटेल डेलिब्रेशन के लिए इसको कमेटी को रेफ़र कर दें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द पीपल जिन्होंने ये सर अलॉटमेंट्स करवाई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अता साहब के पास इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि ये सीडीए इनके अंडर नहीं आती, दो ये जवाब देते हैं। काश ये आप सीडीए आप मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन के अंडर कर दें और इंटीरियर से निकालें ताकि मिनिस्टर साहब की एटलीस्ट प्रेजेंस तो हो। इन्होंने आज अंडर ले ली अपने थैंक यू सर। सीडी और इंटीरियर को। जी अता साहब, इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत दी गई है कि ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो सकती है। दूसरा सर सिर्फ ये सेक्टर नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो लागू किए गए हैं सर। C14 में, C15 में, C16 में भी ये काम किया गया है। दूसरा सर ये प्लॉट्स की वैल्यू पहले ही बढ़ गई है बहुत, ओरिजिनल अलॉटमेंट से लेके आज तक, और जब मिलेगी तो बढ़ेगी ना सर जब डेवलपमेंट होगी जी, डेवलपमेंट होगी तो मजीद सर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, बिकॉज वो एरिया डेवलप हो जाएगा। और सर इसकी जब बोर्ड से अप्रूवल ली गई तो इन तमाम फैक्टर्स को देखा गया, मगर ये अदी की बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप ये डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हैं तो जो अलॉटीज़ हैं उनकी पे करने की कैपेसिटी को भी देखना होता है। तो इसमें सर एक अगर सीडीए को ये हम हिदायत जारी कर देते हैं कि इसके ऊपर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बना दे विद इन सीडीए। अगर कोई लोग माली मुश्किलात का शिकार हैं और वो ये सकत नहीं रखते कि वो ये डेवलपमेंट चार्जेस पे कर सकें इंस्टॉलमेंट्स में भी, कम अज़ कम उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन करने के लिए और उनको मजीद इंस्टॉलमेंट्स में करने के लिए सीडीए कमेटी बना दे। सर ये मैं फौरी तौर पे चेयरमैन सीडीए को हिदायत जारी कर देता हूँ जी, और इस ज़िमन में ऑनरेबल मेंबर को भी जो है हम आगाह रखेंगे सर। जी इनको भी बुला के बता दें, और सिर्फ इस सेक्टर का नहीं, सारे सेक्टर्स का एक दफ़ा रिव्यू करा लें सर। जी सप्लीमेंट्री मलिक इब्रार साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अभी जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सीडीए ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इन दिनों में काफ़ी बेहतरी है, वो बात बिल्कुल मानने वाली है। लेकिन जो ये सवाल है इसमें सर जो मुतासरीन इस्लामाबाद से सेक्टर लिया जाता है, फिर उनके साथ साथ ये ज़्यादती होती है कि उन्हें एक तो उनकी सारी जगह आबाओ अजदाद की जगह ले लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें डेवलपमेंट चार्जेस के लिए मैं मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि कम अज़ कम जो मुतासरीन इस्लामाबाद हैं
उनका जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो हाफ कर दिया जाए, क्योंकि उन बेचारों के घर, कब्रिस्तान, सब चीज़ें ले ली जाती हैं। और दूसरी बात ये है सर कि ये जिन सेक्टर की ये बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो CDA ने सेक्टर आबाद करने हैं वहाँ डेवलपमेंट चार्जेस करें। जिन सेक्टर को अभी इन्होंने आबाद नहीं करना, वहाँ ये एक दफ़ा करते हैं, 3-4 साल बाद दोबारा, जिस तरह आई 14 से आगे आई 15-16 के, वहाँ तमाम जो पोल लगे हुए थे, तारें थी, सारी लोग उखाड़ कर ले गए हैं और वो सारा नुकसान दोबारा एक दफ़ा फिर दोबारा करना पड़ता है। इस चीज़ पे सर एक चीज़ या एक ये कमेटी बना दी जाए सर। दूसरी ये है कि सर जो बाहर से लोग CDA में आकर प्लाट लेते हैं यानी बैरून मुल्क से, उनके साथ जो ज्यादती होती है सर, उसके लिए एक अलग डेस्क होना चाहिए ताकि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए सर। जी अता साहब। और ऑनरेबल मेंबर ने बहुत ही साहिब और बड़ी मुनासिब तजावीज़ दी हैं सर। तो जहाँ पे ऑलरेडी महरीन भुट्टो साहिबा के कहने पे हम एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में सर जो ओरिजिनल अलॉटीज़ हैं और जो सकत नहीं रखते ये पेमेंट्स करने की, उनके हवाले से भी हम TORs बना देते हैं सर। और मेरी कोशिश होगी कि CDA आज ही इसको नोटिफाई करके असेंबली सेक्रेटेरिएट को अरसाल कर दे कि हमने ये कमेटी बना दी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए सर ऑलरेडी एक बहुत फाल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन मौजूद है और वो बड़ी सरगर्म है सर, और उसकी मेंबरशिप भी इंक्रीज कर रही है। तो मैं समझता हूं कि OPF को इस मामले को डील करना चाहिए और जहां जहां वो CDA तक रिस्ट्रिक्टेड ना हो, वो पुलिस के मामलात हैं, वो CDA के मामलात हैं, वो हाउसिंग के मामलात हैं, जिस भी मिनिस्ट्री या डिवीजन के मामलात हैं, OPF सर इसको डील करे तो ये मुनासिब होगा। मेरा ख्याल है इसमें आप मलिक साहब को, डॉक्टर तारिक फजल साहब को, अंजुम वकील साहब को, जो रेलेवेंट हैं यहाँ के, प्लस महरीन साहब, इन लोगों को ज़रूर इंक्लूड कर लें। सैयद जावेद अली शाह साहब सप्लीमेंट्री। सैयद जावेद अली शाह साहब। थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। बात हो रही थी CDA की, तो CDA के हवाले से मैं भी एक विक्टिम हूँ पर्सनली। पार्क इनक्लेव 2 में मैं 2 का अलाटी हूँ और उसके लिए बात चली थी कि जो ज़मीन ये है वो डिस्प्यूटेड है, ज़मीन नहीं मिल रही CDA को। बहरहाल हमने पेमेंट कर दी है, 6 महीने तक पहले पेमेंट फुली पेमेंट कर दी है। जब लेटर दिया कि जी पोजीशन दे दे, तो उन्होंने कोई 45 लाख रुपए का एक फ़रा दे दिया कि जी 45 लाख रुपए आप पे पेनल्टी है। भाई आपकी वहाँ पर अभी भी सर, मैं अभी भी दावा करता हूँ, आप चलें, अगर वो सेक्टर कंप्लीट है तो पेनल्टी मैं दूँगा। अभी भी वहाँ बिजली नहीं है, अभी भी वहाँ पानी नहीं है, अभी वहाँ गैस नहीं है। तो पेनल्टी क्लास तो तब होता है जब आप खुद इन्वाइट करके कहें जी कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। जी नहीं है सर। शुक्रिया जी। अता साहब। सर ये जो डेवलपमेंट चार्जेस जो लागू किए गए हैं, ये इसीलिए किए गए हैं कि ये बिजली, सड़कें, वाटर, सैनिटेशन, इन मामलात को हल किया जा सके। तो ऑनरेबल मेंबर शाह साहब के पास अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट इस हवाले से है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अभी हमें दे दें, चेयरमैन CDA आज ही इनको कॉल करेंगे और इस ग्रीवेंस को एड्रेस करके वापस रिपोर्ट बैक करेंगे। जावेद साहब लिख के दे दीजिए इनको आज ही, ताकि हम इसको CDA आपको जवाब दे। जी शाह साहब का माइक खोलें। सर मैं वो भी दे देता हूँ, लेकिन बस मसला ये है कि इसमें तो इंक्लूडेड था, डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड थे इसमें जी, इसमें अलग नहीं थे। ठीक। जब फुली पेमेंट हो चुकी है उसके बाद इन्होंने कहा जी 45 लाख आप पे पेनल्टी लगी है। आप लिख के दें, तो ये तो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम से भी ज़्यादा हो गई बात जी। ये लॉज भी खुद बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन खुद ही करते हैं। ठीक है तो डॉक्टर तारिक फजल साहब, लास्ट क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं एक बहुत मुख्तसर सा सवाल इस्लामाबाद में जो रूरल एरिया में बेहंगम आबादी में इजाफा हो रहा है उस हवाले से करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले SCO समिट के हवाले से CDA का जो किरदार इस्लामाबाद में रहा और जो इस्लामाबाद की तज़ीं और इसकी आराइश के हवाले से मैं खुसूसी तौर पर CDA को और चेयरमैन CDA को मुबारकबाद पेश करूँगा। और पाकिस्तान का इस समिट से नाम बुलंद हुआ और इस्लामाबाद जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेज़बान के तौर पर पूरी दुनिया ने देखा। सर, जिन मैं बेहंगम आबादियों में इजाफे की बात कर रहा हूँ, CDA ने इससे पहले एक प्लान वज़ा किया था जिसमें इस्लामाबाद के रूरल एरिया में मुख्तलिफ मॉडल विलेजेस का क्या अमल में लाया गया था। तो अगर उस प्लान को दोबारा ज़िंदा किया जाए, हमारा बरीमाम मॉडल विलेज था, जाबातेली मॉडल विलेज था, मूरियम मॉडल विलेज था, और उन पुरानी आबादियों को कंटेन किया जाए और उसमें जो इजाफा हो रहा है वो ताकि जायज़ तरीके से हो, लीगल हो और वो किसी एक रूल और ज़ाब्ते के तहत हो। और दूसरी सर गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद में जो सरकारी ज़मीनें हैं, CDA की ज़मीनें हैं, उन पर बहुत तेज़ी से कब्ज़े हो रहे हैं। लिहाजा ये भी प्लान हमारा एक जो है वो होना चाहिए कि हम अपनी इन ज़मीनों को, जो सरकारी ज़मीनें हैं, उन्हें किस तरह मौसर इस्तेमाल में ले।
जी अता साहब। सर ये ऑनरेबल मेंबर की बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मॉडल विलेजेस का सर प्रोग्राम शुरू किया गया था, उससे ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर एक बाकायदा ऑर्गेनाइज तौर पे रूरल डेवलपमेंट हुई, जो देहात के लोग हैं उनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, बल्कि सैदपुर विलेज को जिस तरह डेकोरेट किया गया, टूरिस्ट अट्रैक्शन सर बहुत वहाँ पे आई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपने नोट कर लिया है सर। ये अगर हम एक प्लान सबमिट कर दें तो हम उसके मुताबिक फिर मॉडल विलेजेस बनाने का सिलसिला जो है दोबारा से उसको जो है वो जारी किया जा सकता है। जी थैंक यू। क्वेश्चन आवर इज़ ओवर। हम 20 मिनट की मगरिब प्रेयर्स की ब्रेक कर रहे हैं। सस्ता शैम्पू लगाओगे तो सर झुकाते रह जाओगे। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स, अब झुका के नहीं सर उठा के। मिल जाए तो मजे की नहीं मिठास चखते तेरे मेरे साथ से नहीं कुछ भी ऊपर सीधी सादी खुशी है सुपर। My father, who was a bureaucrat, had become a secretary. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. I had no active desire to join politics at all. I mean, to me, as I said, it came as a complete surprise that the Prime Minister could even consider me. People who claim to be internationalists suddenly become super nationalist. You know, beware of such people. And I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. China is an exception. And it is an exception. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. You think the timing is accidental. I mean, let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. Politics of India doesn't stop at its borders. Sometimes politics of India doesn't even originate in its borders. It comes from outside. Why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. An illustrious career of 38 years as diplomat, Dr. Jaishankar was India's ambassador in China, the Czech Republic, USA, Singapore and then finally Foreign Secretary. He was picked up by Prime Minister Modi to be part of his cabinet in 2019 as External Affairs Minister. The articulate Dr. Jaishankar is my guest today. Dr. Jaishankar, thank you so much for coming to the podcast. You know, every podcast that I've done, the comment section is filled with, when are you getting Dr. Jaishankar? When are you getting Dr. Jaishankar? So today I'm really That's happy. me commenting. Okay. I don't believe one word of that. So now I'm so glad and my team is thrilled that you're here with us today. And Seriously, pleasure to be here. Thank you. So I am going to get into the macro issues of policy matters and India's neighborhood and all in the second half of the podcast. Okay. The first half is basically a curation of all that I've been seeing on the comments section where people said, please ask Dr. Jaishankar this. So the question which most people had was that how did the transition take place from, being a bureaucrat, a career diplomat, to becoming a politician, joining Mr. Modi's cabinet? Mm-hmm. How did you make that transition? What tools did you employ? Well, I didn't make the transition. It happened. Mm-hmm. I mean, it happened because, as you know, I come from a bureaucratic family. We don't have anybody remotely in the family who's entered politics in any party at any time. It had not crossed my mind. I don't think it had crossed the mind of anybody else in my circle. And then, lo and behold, what happened in May of 2019 happened. Now, once I entered, I must say,
in all honesty. I myself was very unsure. I mean, I had watched politicians all my life. One of the things you get to do in the Foreign Service, by the way, is you actually, perhaps much more than other services, you see politicians up close because you see them abroad. You're kind of working with them closely. You're counseling them. So it's one thing to watch, but to actually join politics, to become a cabinet member, to stand for Rajya Sabha, because when I was selected, I was not even a member of parliament. So each of this kind of happened one by one. I slid into it, sometimes without knowing it. You learnt by watching others. That's something, we say sometimes you go to any foreign environment, you kind of you pick up by. So for me, this wasn't a foreign environment, but it was a different environment. So, you looked at others, more senior people, more experienced people in the cabinet, in the party, in other parties. I mean, I even today, just say, watch me in parliament. I do follow a lot. I look very carefully at what people are doing, both in my own party and other parties. I think there's a lot to learn from everybody. So you get into it step by step. Sometimes you surprise yourself. There is a learning curve. I'd be honest with you out there. There are times when you are a bit hesitant or a bit even nervous. But then, you do it once, you do it twice, you slowly grow over it. So, to stand up there, to reason with people, to make a speech, even sometimes, because in bureaucracy, until really the Prime Minister, that is 2014, Prime Minister Modi's comment, mostly people were used to speaking in English. So there was a language bit, there was a subject bit, there was a environment bit. There's a different culture also. But as your skills as a diplomat, I guess it would have equipped you to win friends over easily, isn't it? I don't think it's so much a question of winning friends. I mean, yes, it does help when you're a diplomat. You in a sense are almost trained, I would say, to get along, to get the most out of situations. Some of it is also different people are made different ways. I mean, you would see I very rarely get into anything personal with people, even when I'm provoked at times. I think people are just made different ways. But I would say this. I mean, it will be 4 years this summer. It's been a very, very interesting 4 years. I'm happy to talk with you later on about it. But when I look at these 4 years, for me, actually, it's been 4 years of very intense learning. Going to a state which I had really very little knowledge of. I'd been Gujarat, a few times, Gujarat. Then having a particular area, as an MP, you work on a village or in a particular constituency. So all of these were learnings, and I find it very interesting. I find every day is a new day. I'm, as you can see, quite enthusiastic about it. Yeah. When Mr. Modi picked you to be part of his cabinet and such an important portfolio, everybody thought that, you'd be like a technocrat or somebody, like, you bring domain expertise and you'll kind of restrict your karma into that region. But then one saw, you evolved. You became like any BJP karyakarta, like any BJP worker. You're part of the party. You take the party line. You go to all states, not just Gujarat. You're going to Karnataka. You go to Tamil Nadu. I've seen you going everywhere. And speaking about the party, it's become part of your the political part has also become part of your making now. For me, it's interesting. That's how it seems to you. But look, this government, this cabinet is very much a team cabinet. Okay? So you don't do your own thing out here. You may have a background, you may come from a stream,
But this very idea that, you will do your domain, as you say, be a technocrat, I don't think it gels with what is this cabinet. Secondly, when I was selected as a minister, I was not a member of parliament. I was not a member of a political party either. I had the choice of whether I would join a political party or not. There was no compulsion on it. Nobody brought up that subject. It was something which was left to me. I joined because when you are joining a team, you join it wholeheartedly. That is where you give your best performance and where you get the best support. And secondly, I really reflected on what is the meaning of actually joining a political party. It's not a decision I took lightly. And as someone who's studied and analyzed politics all their life, it was something for me of great importance. So I joined because I genuinely believe today that this is a party which captures the sentiments and interests and aspirations of India the best. And I get into other issues because, again, one of the differences, moving from bureaucracy, from a department or a service into politics, you learn so much more when you are a member of the cabinet. Your exposure. Every cabinet meeting, there are, let's say, 10 items. It could be on agriculture, could be on infrastructure, but you get a cabinet note. You read the note. You are interested. You will study a little bit more. So you actually your interest broaden, and if your interest broaden when you go out there and speak to people, it'll show up. Is there any difference in how Dr. Jaishankar, the diplomat, thought and operated, and how Dr. Jaishankar, the external affairs minister, politician, BJP worker, thinks and operates? See, in a way, it's like different lives. Now you got to understand the challenge that it was for me personally, because I'm from a bureaucratic family. My father was a bureaucrat. I have an elder brother who was a bureaucrat. My grandfather was a bureaucrat, and we have aunts and not aunts but uncles who were there. So our world, if I can put it to you this way, was very, very bureaucratic. Our goals, our dreams were bureaucratic. What do you mean by that? Meaning, if you had asked me, if you and I had met, which we had, let us say in 2010, and say, okay, Jaishankar, what's your dream? I'd say, I want to become foreign secretary. That's the dream of any foreign service officer. In our house, it was also particularly, it was something we put. No, you never said that. No, because you never asked me. It was in 1993, I think, that I first met you. Hang on. You never asked me that bluntly, but had you asked me that, look, it's a reasonable dream to have. I mean, after all, when you, if you start a business or you do something, you want to be the best in it, right? Yeah. Okay. I mean, there's nothing wrong with that. Sure. So, fine. I wanted to be the best foreign service officer. And to my mind, the definition of the best that you could do was to end up as a foreign secretary. Now, in our household, there was also, I would say, I won't call it pressure, but we were all very, very conscious of the fact that my father, who was a bureaucrat, had become a secretary, but he was removed from his secretaryship. He became, at that time, probably the youngest secretary in the Janta government in 1979. For viewers and listeners who don't know, Dr. Jaishankar's father was Dr. K. Subramaniam, who played a key role in formulating India's strategic doctrine. Sorry for interrupting you. So, in 1980, he was Secretary Defence Production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And, he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defense. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. But the fact was, as a person, he saw his own bureaucratic career in bureaucracy actually kind of stall. And after that, he never became a secretary again. He was superseded during the Rajiv Gandhi period for his
somebody junior to him became cabinet secretary. It was something he felt. We rarely spoke about it, but it was obviously something which must have been inside him. So he was very, very proud when my elder brother became secretary. In my case, he passed away in 2011. At that time, I had got what you would call grade 1, which is like a secretary rank ambassador. I didn't become secretary. I became after he passed away. But for us, at that time, the goal, you could say, was, okay, we must become secretary. Now, as I said, I had achieved that goal. So in 2018, I was very happy to kind of walk away into the sunset. I ended up finally walking not into the sunset, but into Tata Sons. I was, I think, contributing my fair bit there. I liked them. I think they liked me. Then completely as a bolt out of blue, the political opportunity came. Now, the political opportunity for me was something I needed to think about, because I was simply not prepared for it. So I did reflect on it briefly due to the pressures of time at that time. When you say what is the difference between the foreign secretary or the bureaucrat Jaishankar and the minister, thought process, it's a different world. It's a different responsibility. It's a wider vision. And I put it to people like this. I may have sat 40 years in the parliament gallery. It's not the same as being on the parliament floor. I used to sometimes, in fact, Sushma Swaraj was my minister, and as foreign secretary, we used to talk a lot. I mean, we had this practice. We used to have I'd go and see her every day, but of course, day would begin by her actually calling every morning. And I always had the comfort as a secretary. And if I don't want this to sound immodest, I was a confident secretary. I believe I was a good secretary. But I had the confidence that I have a minister and a prime minister above me who at the end of the day shoulder that political responsibility. Now, come May 2019, that political responsibility is mine. It's a completely different feeling. As a minister, you have to look at it not departmentally. There may be something, let us say, which is, I'm giving you an example. Say wheat export to some country. As a secretary, I would say, that country's relationship is very important. But as a minister, I'll have to say, okay, what's my own wheat prices looking like? What are the domestic concerns out there? Who else do we need to talk to? Every issue, every major issue has some political angle, which a minister will tend to see much faster than a bureaucrat, however good that bureaucrat may be. So it's kind of challenging? Yes, absolutely. It is. Okay, so I don't know whether you'll answer this question, but I will ask you that who asked you? Was it the Prime Minister? And two, what was the first time that you met Mr. Modi, and what were your first takeaway of that meeting? Who asked me, meaning who asked me to join the cabinet? The government. Yes, the Prime Minister asked me. Okay. When did I meet Mr. Modi first? I met him in 2011, in November, in Beijing. I never met him before. Oh, he was Chief Minister then? He was Chief Minister then. Okay. He had come on a visit. And that's how our acquaintance started. I assume in the light of later events, I must have made a good impression. I can tell you, frankly, he made a very big impression on me because by 2011, I had already done, I had done what... Two ambassadorial postings already, No, right? this was my third. Third one, yeah. And I'd seen... So Singapore and Czech. So I'd seen, people come and go, chief minister. I had never met someone better prepared, better, more serious, and also more... I found him very interesting. I give you and this is a person, by the way, we are meeting here for the first time. So
we go through this business briefing, what he should say, who he's meeting, etc. Then he said that मैं आपसे अलग बात करना चाहता हूँ, कुछ राजनीतिक विषय हैं, उन पे भी मैं briefing लेना चाहता हूँ. It was a bit of a surprise. No chief minister had done that. And of course, he told me, I mentioned it in one piece I've written, saying, look, it's very important for me that I'm abroad. I may be from a different party, but I shouldn't say or do anything which is different, that too in a country like China. So it's very, I want you to brief me on key issues. And we were having our problems at that time. Even at that time, there was a listing problem. There was staple visas problem. They were not dealing with our northern command. There were, all these Arunachal. There was some Gujarati diamond. Yes, there was a bunch of Gujarati Surat diamond traders who had also been detained. He brought that up as well. After I was done with him, and we went for the meetings, and then we were riding in the same car. So he said, I have this habit. He said, मैं हर मीटिंग के बाद मैं debrief लेता हूँ. और अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि things are not okay, आप इशारा करिए. Okay? So I remember this because, for me, there is a certain manner of working which he has. He's all the time like gauging, sensing, very, very sensitive to this, very keen that he should not make a mistake, that he should convey things accurately, that the policy, that the nuances are captured. This was my first experience of him. After that, I didn't see him till he became Prime Minister. Okay. Is it the same now, before he travels, after he travels, when you travel? Is it the same kind of thing, foreign policy matters, you talk to each other, where he asks questions, you answer, you ask questions, he answers? Is that how it works? No, it is and it isn't. I mean, intrinsically it is the same, but it's now on a totally different scale and league. Sure. So now what happens is usually, we would strategize before, we spend, usually I'd say even not at the beginning of the year, but even in the previous year, we'd start thinking, what should we be doing? Where are we going? Who should we engage? That kind of strategy session. When it comes to something specific, it would be like we would go through the details of where we are going, what are the objectives, who are we meeting, what are their objectives. So there's a kind of, I would say, strategizing and a game planning which goes well ahead. And then it's repeatedly visited, reviewed. So sometimes even in the midst of meetings, you would see us, one of us lean across and say something to him, or him doing the same. Or if there's a break in a meeting, we would have a quick confabulation. I mean, you could, since ANI films a lot of this, you would often see, there's a quick huddle where you're quickly saying something, we are updating, or he's sharing. He's, we can't hear though, because there's no microphone. Fortunate. Thank God you can't hear, because, that would kind of destroy our strategizing. We should get somebody to see the lip syncing and see what's happening there. But he's a very discussive person, if you know what I mean. And he has views, but he's very open to, opinion, agreement, disagreement, improvement, mitigation. It's very sort of, how do I say, interactive. Lots of people say that he's a very ideas kind of a man. In fact, some of the questions were on YouTube with that. And my team has made a video, which I'm going to show it to you. I'm part of the East, I'm part of the South, I'm part of the West, I'm universal. I'm India. Someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism. You're not fooling anybody by saying these things. Mr. Soros is a old, rich, opinionated person. If I could only stop at old, rich and opinionated,
I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. Our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. You're asking the wrong minister when you say, how long will we do this? Because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. If I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example in Asia, you could ask, why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? If you are asking me, I would say yes, 2014 was a watershed moment. Yes, things have changed better after 2014. Yes, our foreign policy has become more dynamic, more effective, more prominent after 2014. Mr. Modi was very famous and very demanding. So how do you deal with that? I'm so glad you chose that understated word, demanding. Yes, I think the Prime Minister is demanding. I think is rightly demanding, because it's time that India had a demanding person as Prime Minister. It's tough to work for a demanding boss, but at the end of the day, you actually, if you feel that's the kind of person the country needs, I think you're willing to do whatever you have to do at that time. Two democracies will end it differently. And if you can prove that concept here, then I think it's probably the best way to sell democracy. Don't worry, Senator, one democracy will settle it. And you know which one. Okay, Lindsey Graham. So this, all right. So this is what we, my team got this together, okay. And the same thing about being a demanding prime minister. One has heard about how you have 11 p.m. meetings and 11:30 midnight, post-midnight meetings happen in this cabinet, and it's like working, especially during COVID times when these crises happened, the Ukraine situation where Indian students had to be evacuated. Those are like very tense times, right? And he's on the job all the time? Well, look, I don't want you to get it wrong. It's not like you particularly want to meet or the meetings happen at 11 o'clock or late at night kind of thing. I think it's a situation, it's partly the Prime Minister's schedule. But you mentioned, for example, the Ukraine conflict, Operation Ganga. Now, what was happening at that time was that the Prime Minister was busy campaigning in UP, if you remember at that time. Now, last year, same time. Yep. Now, 24th of February, I think. A little bit later. Yeah, 24th. Okay. Now, it could have been, I don't know, maybe some other Prime Minister would have said, okay, guys, I'm busy with UP, now you go manage this. But I think it bothered him. He felt he needed to get a good sense. I mean, lives were at stake. So we would have situations where he would campaign the whole day, come back to Delhi. I mean, you could see sometimes, how exhausted he was. And then somewhere he would find that energy and the adrenaline. And we would meet late because he's come back late from campaigning. Sometimes the situation would call for it. I think I once mentioned this, maybe in one of those same occasions you showed me right now, which was our consulate in Mazar-e-Sharif being attacked. And I remember I think it was past midnight, and I also have this habit of staying up late, and I like to clear my desk every day without fail. And in fact, he called up, and normally, some other guy comes up and sort of says the PM wants to talk to you. In this case, it was him. And so I think if there is something happens, he feels, he feels deeply about it. He sort of feels it's not like ask somebody to do something. He wants to know that it's being done. Now, mind you, having said that, I also say this as his working style, that once an objective is achieved or
a mission is set or whatever it is, you get the space to then carry it out. Okay. So say Operation Ganga, I mean, he would want to know what we were doing. He would sometimes give suggestions saying, अच्छा आप ये कभी इसके बारे में सोचा, कभी इसका भी देखिएगा, वहाँ भी ये करिए. But it was not like he was wanting to, get down. He trusted you with the details. And that's why, I mean, for me, the sort of, I would say, the pleasure of working with him. I mean, what does anybody need from a boss? You need from a boss somebody who gives you a goal with clarity, who, whatever their thoughts, ideas, etc. share. Then if you are the experienced operational person, you leave them to figure out how it is done. You take your feedback. You might want to course correct. But he gives you a lot of the space, and which is why I think if you look at the last 7-8 years of Indian foreign policy, we are able to move. I give you why Operation Ganga. I'll give you Operation Dost right now. Yeah, Turkey. Yes. Turkey. The earthquake happened. I mean, I think literally in a very, very short time, he wanted to know what are our thoughts. I kind of sent in our thoughts. I very quickly consulted, my people in my own ministry. And literally within a few minutes, we were told, okay, you got the go. Now, go, talk to NDRF, whatever. Yeah, in 48 hours, if I'm not mistaken, that they were already there. We were less than 48 hours. Than 48 hours. Yeah. You were talking about delegation and about getting things in order quickly. We've seen videos of the Cabinet Committee on Security, CCS meetings. It looks like this is the creme de la creme of the cabinet. Everybody getting together, very serious looking, very tough. And you all look like, बहुत पहाड़ टूट पड़ा है, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा. What happens in these meetings? We saw that Uri, Balakot, Pulwama, Ganga, Operation Ganga. We saw this during COVID times. How do these meetings take place? What happens? Does everybody input, output? What happens there? No, it would vary. See, if there's a larger meeting, usually there would be some kind of briefer in any meeting, because somebody has to put the proposition and then, obviously then the floor kind of gets opened up. Typically, the Prime Minister comes in sort of late, I would say. I mean, he allows people to speak before he actually says anything. That would be a norm. We may look very serious because usually when CCS meets, it's a serious matter. The routine CCS meeting, we have, if there is something which, some agreement or purchase or something needs to be cleared, often you don't get the photo of it because you yourself would not be covering it. So you would not, most of the pictures you do have would be of occasions like Uri or post Galwan, where the situation is serious. And I think it's obviously reflected on our... Because there's no briefing after the CCS. We never get to know what happened. Yes, but look, I think governments at the end of the day are supposed to focus on governance. So if you have, if there are decisions you made which need to be executed, you're not going to come and tell the press, guys, we just made this decision and that is how it is going to be executed. Okay. So now let me come to, when we were talking about how you do your briefings to the Prime Minister, you do your briefings to the Cabinet. What happens when you're with parliamentary committees? There is the opposition also out there. Parliament? Or in Parliament. But the parliamentary committees, there are opposition members also, right? The Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Oh, okay. Consultative Committee. Consultative Committee, sure. right? So there are people from the opposition also in that. Sure. So how do you convince them about policy matters? Well, I
I have only experience of my own committee because both as Foreign Secretary and as EAM I've dealt with them. The way I deal with them is we take a subject, we tell them this is the subject. Normally we take something very topical and then we would have again a presenter. Often it would be the Foreign Secretary, could be some other secretary, normally not. Then I open it and encourage everybody to have their say. And then what would happen is, in some cases, the presenter may respond, but I would, as a minister, respond to every one of the comments which are made by every one of the members. Okay. So my intent of doing that is really, one, to underline to them that we take them seriously, two, not them seriously but their concerns seriously, two, it does help in kind of carrying them along and sometimes in convincing them, though politics is politics, so sometimes whether they're convinced or not, they would not admit it. Rahul Gandhi didn't get convinced by you. In fact, he said that, I think you were, I don't know the exact words, but I think he said that you did not know much about foreign policy matters. You needed to learn a little more. Well, let me put it to you more accurately. This wasn't at a parliamentary committee. In parliamentary committees, we have interacted, but usually what happens in parliamentary committee, I try to keep to myself, so I will not get into it with you either. This, I think, was something he said at some kind of public meeting somewhere. It was that you don't know much about. I think he, look, I cannot vouch for the exact words either, but I think it was probably in the context of China, if I remember right. Yeah, he's not convinced about China. Yeah, but I mean, he thinks that you are opaque about it. I don't know whether it's opaque or whether, there was a sort of a level of knowledge, understanding. I mean, all I can say in my defense is I have been the longest serving ambassador in China. I have been dealing with a lot of these border issues for a very, very long time. I would say, let me put it to you this way, I'm not suggesting I'm necessarily the most knowledgeable person, but I would have a fairly good self-opinion of my understanding of what is out there. Okay. But, if he has superior knowledge, wisdom, I'm always, as I said, for me, life is a learning process. Superior knowledge